Vrinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupada Paramaspara Acharya Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Namacharya Haridas Thakur ki प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड देवी गोवर्धन की नवदीप धाम मायापुर क्षेत्र की पुरुषोत्तम धाम पुरी क्षेत्र की वृंदावन धाम की गंगे माई की यमुने माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious Sri Guru and Gauranga. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। रिकॉर्ड वाला इंट्रोड्यूस हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। So I request everyone to come a little forward because there are going to be more devotees who will be coming soon. We will lead space again. Hare Krishna. Yeah. So we are blessed to be here in the association of His Grace. Chakrapani Prabhu. We already have a junior Chakrapani Prabhu here. Yeah, but we are very grateful that Chakrapani Prabhu who has come here. He has written this book and more than the book. Hare Krishna. Hare Bol. Okay. So today, there is an introduction that I have, which I could read out, which I will read. So Prabhuji is a former software engineer from HCL. He worked there, connected to ISKCON in 2007. And Prabhuji served in war-affected regions of Sri Lanka. And Prabhuji has researched the 13 plus academic disciplines to collect historical evidence about Lord Sri Krishna. हरे बोल। He compiled this book, Mahabharat, Myth or History, after 5 years of exclusive research. And Prabhuji travels extensively in India and abroad for showcasing his research, leading several research projects to establish the real history of India. Right? So, what I would say is, we have this book here. We have very limited number of copies there. Maybe, I don't know, 60, 70. I don't know how many are there. But whatever are there will be gone in front of your eyes. When Prabhuji is here, you can take a signature from him and keep it as a memorable book, because this book is going to change a lot. It's going to create a new history. Books like this, right? See, many of us faithfully, we are practicing Krishna consciousness, and we know Mahabharat. Mahabharat is our favorite episode. Ramayana is our favorite episode, right? Epic that we like to hear. But somewhere deep inside, when we are questioned about the authenticity or the actual happening of these events, somewhere our faith becomes a little proofless. Or we start telling that, okay, we believe it, whether we believe it or not. Somewhere we say that sentence. And deep inside it affects us, and definitely to our next generation children. I was telling both my sons today, forget about everything, sit here and listen. Because who else will show you with proof that actually this happened? When we go to Vrindavan and our great Sannyasi Maharajas, they say, this is the track where Lord Krishna walked. Right? The footprints of Lord Krishna in Radha Damodar temple. We look at that footprint and like, yeah, it's nice, you pay obeisances, but somewhere it is not still connecting. You are not really believing that actually Lord Krishna traveled here. And all this is done, don't think our faith was gone by fluke or something. They were methodically planned and removed. Right? We are a product of great research done by
lot of people who come here invaded this country and they have methodically removed that proof from all of us. There is no Krishna in our DNA. There is no Rama in our DNA. Our DNA itself is changed so badly, they have programmed and removed it. Now, this new generation with the whole social media opening up, information opening up, right? So many avenues to know things opening up. Now is the time that this new generation reverses it with even stronger message that no, actually, this is not mythology, this is our history. Krishna is my great grandfather. I know Bija Pradapita, but he's also my great grandfather. I'm coming from him, right? All our gotras, what we quote, all these rishis exist, and all whatever happened has actually happened, right? And when I was seeing the content of this book, which anyway Prabhuji is going to go through, right, he's going to give a brief introduction in the limitation of time. But there is so much to discuss and know from this book, where Prabhuji has actually gone into the detail of each, how Mahabharat has affected each part of the country, where you can see the reflections of an epic, right? That also he has covered. And how around the world proofs can be seen that Mahabharat actually happened, right? And not only Mahabharat, it's about our whole existence, right? Our culture, our all the devatas, the Supreme Personality of Godhead. I'm sure if Prabhupada would have seen this book, he would have, mass publicized it because Prabhupada also did the same thing. He brought Krishna back into our lives. Krishna, the same Krishna was almost, almost he became like a prayer only, without any solid proof or explanation. Right? Now Prabhupada has brought back Krishna to our lives. And now Prabhupada's disciples and grand disciples and Prabhuji's like this Chakrapani Prabhu are making it more and more solidified. What I want most of you to do, many of you, some of you have still not come, is please hear this lecture with rapid attention, because you are going to be the messengers taking it to the next place. And many of you are preaching in so many communities. You can order this book, you can take Prabhuji's number, and you can distribute in your communities, because it has to reach every academic child. And Prabhuji told next he is going to, he's basically from Chennai, comes from Chennai, from Tamil Nadu, and the whole Aryan invasion, Indus Valley civilization, what we are taught in our textbooks and what the reality is, he's also going to write on those aspects. Now, the beauty is you see so many references. I just glimpsed the book. Every page has references from where he has taken it. So nobody can question that, oh, you have written what you want to write. No, it is referred from, it is, it is discussed, it's properly explained. So without any more delay, let us welcome Mr. Chakrapani Prabhu with 3 loud and enthusiastic. Haribol! 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 Let's take every bit of, maybe in the last 15 minutes we'll have a little Q&A. But let us see what we can get in the given time. It might be a little long lecture, but we are always used to long lectures. So let's be attentive and hear the lecture. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna! Thank you, Prabhuji, for giving this opportunity. First of all, I don't find myself actually qualified to speak in devotee communities, but somehow with the unique thing which I did, somehow devotees are thinking to give me some extra mercy and giving the opportunity to give lectures. Otherwise, there are exalted devotees in our society all around. So, today's topic will be very intriguing. It is devotional and at the same time it is academic. Okay. English, Hindi also mix. Everybody knows English. So, how many of you don't understand Hindi? Okay, quite a lot. How many of you don't understand English? Okay, कितने लोगों को हिंदी इंग्लिश कितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती?
go in English. I think that's the fair decision. Okay, so I think we have to switch on the English channel right here. So we will do historical evidence of Mahabharata seminar today in English. Okay. So when we go for preaching or when we speak to our relatives, like I had an experience when I was a new brahmachari. I was a brahmachari in ISKCON for many years, especially in Sri Lanka. So when I used to go for book distribution Bhagavad Gita, people used to say, "Hey, क्या है झूठी कहानी फैला रहे हो? What is the proof? This is all mythology, right? There is no proof for it." If somebody says this to you, how would you answer them? Okay, anybody wants to say? They can lift their hands up. Yeah, young and energetic. Yes, go ahead. आप बैठ के बता सकते हैं? Anyway, tell them. Don't need to stress yourself. Yeah. If Krishna is a myth and God is a myth, then how are we all alive? I am not asking theology, philosophy. I am asking you, Krishna, Bhagavad Gita, Mahabharata, this is all imaginary. Somebody created it at a certain point of time. If somebody is saying this to you, I am saying this to you, counter me. Without Krishna, then how are we alive? Like, without That is Krishna, your- do we have the intelligence to create the soil? Do we have the intelligence to create flowers? That is your belief. That is your vishwas. I don't accept this. I am an atheist. Yes. We need equal participation from all devotees. From here also, we expect some hands rising and some answers. Yes. Because many hands are rising here. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna and Mahabharata are myth. How do we find historical evidences of Dwarka under the ocean? But that Dwarka could also be from some other king. And it is exactly as per what is mentioned in the What is scriptures. exactly as per scriptures? It says where Dwarka is in Srimad Bhagavatam. And if we actually look at What the does Srimad evidences, Bhagavatam say about I'm not exactly sure about that, Prabhuji, but So that is how the data comes into play. okay. Right. Okay. Great. Very good. Right. Yes. We have many texts coming in the form of generation to generation, which describe the presence of Krishna. I would say that these texts were created at a certain point of time. No. Your Mahabharata itself is imaginary. No, no. Bhagavad Gita, which is part of Mahabharata, is also imaginary. Counter. Yeah. So it's a way of transferring the education. Have you seen? Huh? Have you seen? Absolutely. 5,000 years back? No, no, no. Right. The same. 5,000 years back, we may not have videography and photography, but we do have. But how do you? This is your belief. I say this is your belief. Your belief has no valid or scientific basis to it. Yes. Some participation here also I am expecting. Yes, Prabhuji. There are many temples where the story is depicted, right? You can see. The temples were created 1,500 years Yeah, back. so at least. They are not that 5,000 time- years old. Yeah, it's okay. It's not Hinduism is a reaction to Buddhism. It's not 5,000 years old, but still it goes back. So I'm to not. 1,000 years. That is not my question. That doesn't matter to me whether temples are 1,000 years or 2,000 years. I am asking Krishna, Mahabharata, Bhagavad Gita. These are all mythology. How can you disprove it? There are so many tricks. There are so many places which is mentioned in Mahabharata still exist. The best example is Kurukshetra. Yeah, Kurukshetra. That name might have been given by someone else in the later period of time. It's still out. It's not just one name. There are so many. All names could have been at a certain point of time. They might have put the names at a certain point of time. सब नाम एक ही टाइम पे. चलो अभी व्यासदेव जी, आप एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करेंगे, डायरेक्शन स्क्रीन प्ले आप ही करेंगे, फंडिंग आपको क्राउड फंडिंग करेंगे, क्राउड फंडिंग आपको करेंगे, यू क्रिएट अ स्टोरी, यू राइट इट एंड चलो राजा को कन्वर्ट कर दिया, राजा ने पूरा नेमिंग वेमिंग सब कर दिया एंड न्यू इमेजिनरी आइडेंटिटी क्रिएट हो गया महाभारत. They have done the carbon dating for Dwarka also. So the What does the carbon dating say? carbon dating says that it's around 5,000 years old. So that's why Well, who has given that day means who is that day? There And is what exactly which artifact they have studied to say it is 5,000 years old? Maybe some stone which broke from a mountain went inside and fell. That dating is 5,000 years old. Doesn't matter. But how come the sculptures are there in Which sculptures are there? Dwarka are there? Which sculptures are Krishna, there? olden temples are there. No, they are not 5,000 years old. Okay, anyone else?
Good try. Yes. Anyone else? Okay. There was evidence about that type of vessels that were used at that point of time. What type of vessels? Where it was formed? Yeah, All of you are narrating. Somewhere you heard this and heard that. Exact data. This is Yes. Professor Mohammed, who was Professor? Archaeological Survey of India, who did that job. KK Mohammed. No, KK Mohammed did not do anything on Dwarka. He was on Ayodhya. So don't confuse Ayodhya and Dwarka. Yes. Anyone else? I am saying your Krishna is mythology. जो भी आप कर रहे हो हरे राम हरे कृष्णा पूरा imaginary है. इसका कोई historical basis नहीं है. Yes. Excavations from Indus Valley civilization found some Pashupati Shiva sculptures. Okay. Indus Valley civilization peaked during 2600 BC. Okay. And it actually started 7000 years ago in 7000 BC in Mahabharat, Baluchistan. Okay. In Baluchistan, there are Hindu gods. That was the One first. second. My question is not about Indus Valley civilization. I totally respect your answers. They are fascinating. I didn't come to it. Yeah, go ahead. So, Pashupati Shiva is a Hindu god, and 7000 years ago, those sculptures existed as ancient gods. Right. And Indus Valley civilization existed from Baluchistan to UP, Ghaziabad in the Perfect. east. So, Perfect. those utensils and the chariots mentioned in Mahabharata, those timelines were matched in carbon dating. According to carbon dating, those two were matched, and that is a proof of Mahabharata. But Mahabharata's dating, what is the Mahabharata's dating and what is Indus Valley civilization dating? Who has matched it? The chariots And and chariots. used in Kurukshetra war. Where was it The found? remains of these chariots. Where was it found? They were found in UP. Which Uttar Pradesh. place? Ghaziabad, I don't know. You are really good. I mean, I really appreciate you. You have very close to the answer. But still, I'm expecting someone to be like really hit the bullseye. In the place where the Kurukshetra war happened, they have found immense radiation due to the weapons that This they have many used. scientists don't accept this. This is not accepted as scientific. Because they have found the amount of radiation there, and there is Yeah, no. but there could be also radioactive material which is there from long time. That radiation could also be coming. We never know. This is all going to be discarded as speculation. But the best try was definitely from him because he tried to bring it to Pashupati because there is somehow connected to the evidence which I'm going to present in the class later. Okay. Yes, anyone else like to try? मैं बोल रहा हूँ आपका महाभारत छोटा काम नहीं है, भगवत गीता छोटी कहानी है. क्या पढ़ रहे हो हरे राम हरे कृष्णा टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसको काम नहीं था. व्यासदेव नाम के व्यक्ति थे. He was sitting in the forest. Somebody did crowdfunding and then ऐसे एक स्टोरी लिखना है. राजा को कन्विंस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और पूरे देश को हम हिंदुइज्म के कंट्रोल में लाएंगे and we will keep everyone subdued under Sanatana Dharma. Counter me? Yes. Finally, first Mataji who is attending. Yes. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. So your question was like when someone is atheist, right? They don't believe in Krishna. So what can be our stand? So in that point, No, that is not my question. That is not your question. My question is if somebody says Krishna is mythology, Okay. Bhagavad Gita is a lie, somebody created it, how will you answer it? Okay. That answer I don't have. Right. So I was trying to say that That is divinity. Your argument is very respected. I am not against that Yeah, point. so- But you are speaking on the divinity aspect. Yeah. He must be God and so on. No, Any other- I just wanted to share something. Yeah, I am a Bengali. Yeah. So we have a proverb saying that Bishasya Milai Krishna Torike Bohudu. So which means that if you believe, then you get it. If you argue, then it's so far. You cannot get it. You can never get it. Yeah. So Yeah, that is true. By Yeah. argument, we cannot attain the absolute truth. Perfectly so fine. But some whoever people- comes like that, Yeah, so but I some- always tell them to experience yourself and find it yourself. But academics में चलता नहीं है. If I say, मैं जब यूनिवर्सिटी लेक्चर में जाता हूँ,
वहाँ पे experience yourself and understand Krishna is historical. झाड़ू मार के भगा लेंगे. That's okay, that's Krishna's wish. Yeah. So anyone else like to try? Thank you. Yeah. Anyone else like to try? Yes. Go ahead. So this is something my mother had told long time back. Okay, great. And देखिए आपके फैमिली में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. फैमिली टूटा है, मैंने देखा है, seen families breaking, devotees and some families, some members are not devotees. They think it is all mythology. ये क्या बकवास कर रहे हो, काल्पनिक चीजों पकड़ के बैठे हो. So families are broken because some think it is real, some people think it is mythology. It's a serious problem here. Yes. so based on the Hindu calendars and the names, Yeah. the names of the days that are mentioned during the Mahabharat 18 days. Okay. So she mentioned about the day when Arjuna had to kill. I'm really sorry, I'm off. It definitely should be Jayadratha. Jayadratha. Yeah. So and then Krishna. Because the astronomical. Exactly. That's Astronomical astronomical data evidence. Yeah, good. And basically they found tracking those dates that actually a solar eclipse had happened that day. Fine. Good try. Very good try. So that was one. Appreciated. Yes. Anybody else like to try? I'm saying Bhagavad Gita is imaginary, fictional. Mahabharata never happened. Krishna is an imaginary character created by people like you. Counter me. So principles in Bhagavad Gita are still applicable. That is principles. That's not history. I'm speaking of history. I'm speaking historical evidence. Principles से कोई I still like principles of for example, you might like principles of Hitler. That doesn't make a difference to the question which we are discussing right now, which is ये हुआ था या नहीं हुआ? Yes. Anybody else like to try? Last दो लोगों को chance देंगे last. ठीक है? Then we will start. Yes. I'm not actually very sure, but what my opinion is that, like in the who is introduced. So Prabhu, for the beginning itself, he is giving disclaimer. मैं ज़्यादा short नहीं हूँ, मुझे bound मत करना. So in Bhagavatam, like Kapil Muni explained Devati Mata, how that baby born. That is Vedic science. No. Science की बात. I'm telling you. So there are so many things that are explained in the scriptures well before, and in this there Ayurveda, there is Viman Shastra, there are so many things that are written many years ago in the Sanskrit language, and they are now becoming true. So and now people are turning to the higher book, and they know that it's true. There is also mathematical in the scriptures. So if so many things are now becoming true, then why these things are not true? And I would say whatever you said may be true, whereas the story itself may be false. Many academicians actually believe that selective portions of Puranas, selective portions of Itihasas are true, but the entirety is not true. How will you answer that? Yes, anybody else? Last try. Last try. Anybody likes to? I am challenging. I am saying that जो भी आप कर रहे हो, it is all bogus, fictional चीजों को follow कर रहे हो. Yes, brave warrior, Prabhuji is coming now, saying I am the last one who is going to defeat you. Prabhuji, whatever they are doing is bogus, then why are so many people writing books and giving So their एक argument है कि अगर सब कुछ bogus है तो इतने लोग convert कैसे हो रहे हैं, एनरोल कैसे हो रहे हैं, भक्ति में इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हैं? वेल देखा जाए बहुत सारे हिप्नोटिस्ट भी हैं, they were very successful in having thousands and thousands of followers. You are an atheist because you follow certain crowd. Okay. Why are so many people going to temples? They find their soul is there. But that doesn't have anything to do with the historical proof of it. Let's keep aside that historical That is part. what is how we keep it aside. That is the discussion there. That is the discussion. I totally accept whatever you said regarding the practical aspect. Fine. But I am saying it is based on some imaginary theory, belief, stories which someone at a certain point of time created for a certain purpose. उसको counter करें. Okay, I think we gave
all chances exhausted. ठीक है? अभी हम we will discuss the why Krishna, Mahabharat, Bhagavad Gita is not mythology, it is actual history. अभी देखिए अभी for example if we have to go really deep, we can go like ऐतिहासिक सप्ताह, like just like भागवत सप्ताह. मतलब एक हफ्ते में पूरा आपको इंच बाय इंच क्लियर करके बता दूंगा कि कैसे भगवद गीता is actually so ancient. Mahabharata's entirety is true कर सकते हैं. But you are also having your own commitments and I also have to travel to the next city and keep moving. So we will be presenting a overview, but this overview itself for many might go like too deep. Right? So we'll try to make it as simple as possible. In this seminar, if you have any difficulty in understanding, समझने में difficulty हो रहा है, तुरंत से raise your hand and ask me to repeat or interrupt me. You have the full freedom to do so because unless you understand one portion, it will not connect to the next portion. So make sure you keep understanding and proceeding. Right. So we'll show you some very interesting slides in the beginning, and then we will go into Vedic anthropology. In Tamil, how do we say? Chakrapani? मानव शास्त्र, वैदिक मानव शास्त्र. वैदिक मानव शास्त्र according to Telugu. मतलब Vedic history कहाँ से शुरू हुआ है? How it started, how people migrated, how they created civilizations. We will touch upon it, and then we will come to Bharat, India, and then we will check upon the historical evidences, historical impact of this great war called as the Mahabharat. Okay. Right, now you have to listen with full focus, otherwise you will miss it. Forget about who's coming and going. You focus on this. Otherwise Krishna will go. Krishna will go. This is Krishna, okay? So this is Krishna Balram coins found in Afghanistan. 2,300 years old. This is carpets, not floor carpets like wall carpets. They used to have wall carpets in which they have painted Krishna, and this is found in China. This is underwater Dwarka, where they have found one amazing shloka, which I will decode it at the end. Okay? Matlab, what is said in the Mahabharata is found in archaeology. That we will see. So it's all based on this book, Mahabharat, Myth or History. Fortunately or unfortunately, I have authored this book. I don't know if you all will be able to appreciate it. If you all find value with this book and if it helps you all in any way possible, I consider it to be a great victory in whatever I did. So Mahabharat Myth or History introduction we have done plenty, so I'll skip it fully and straight go to today's seminar. Right. So Indian history is very fascinating and also sometimes very boring. How many of you slept in history classes? See, brave, Prabhuji, I really appreciate it. With full confidence. Yes, I slept. So, in fact, I also did not like history class. But now I'm crazy about history. Right, so history, why it is boring in our schools, colleges? You know why it is so boring? अरे मुगल आया था, उसने यहाँ पे मंदिर तोड़ा, उसने ताजमहल बनाया, ब्रिटिश आया, उसने हमें शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये आया, तुर्क आया, अहमद शाह अब्दाली आया. मतलब it is just a sequence of events narrating how we were humiliated. Right? Does it speak of a glorious history? The Mahabharat war हुआ था, great kings were ruling, amazing impact था, world over ये लोग का impact, civilization का impact था, how यहाँ से लोग पूरे दुनिया जाके they influence the various civilizations. ये कुछ नहीं बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ये आए थे, हम यहाँ पे चाटा खाए थे, फिर वो आए थे, फिर यहाँ पे चाटा खाए थे, तीसरा आदमी आया और मुझे लात मारा. It's a victimized story. I'm a victim. An Indian is a victim. तो पूरा हमारा जो फाइटिंग स्पिरिट है, क्षत्रिय स्पिरिट है, उसको पूरा खत्म करना है. ये कहाँ से शुरू हुआ? ब्रिटिश पीरियड से शुरू हुआ. जो मुगल्स थे उनका आउटराइट अटेम्प्ट क्या था? मारो, काटो, तोड़ो, जला डालो. मारो, काटो, तोड़ो, जला डालो. Because if you see even in Vrindavan, how many of you know Vrindavan was destroyed and burned multiple times? कितने लोगों को पता है ये चीज? आपको पता है it was burned multiple times? 10th century, 12th century. मतलब
these Turks, Afghans and all these who came from outside, ये लोग क्या करते थे, वृंदावन एंड मथुरा उनका फेवरेट था जला डालने में. So they will come and kill all the जो भी priest मिला, जो भी सनातनी मिला, मारो काटो, फिर एंटायर सिटी को जला डालो. इसीलिए आप सोच के देखिए, जब आप वृंदावन जाते हैं, many of you would have wondered, ये क्या है, 5000 साल पहले कृष्णा यहाँ पे आए थे, ये मंदिर नए नए क्यों हैं? ये राधा गोविंदा भी 500 साल पुराने हैं, बांके बिहारी 200 साल पुराने हैं, और कृष्णा 5000 साल पुराने हैं. कमाल कर रहे हो लोग. आता है आपके माइंड में सवाल आया होगा, कितने लोगों के मन में सवाल आया है? मतलब सब मंदिर नए नए और कृष्णा 5000 साल पुराने, और मैं इसको मानूं. सवाल आना चाहिए, राइट? डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर आया होगा, नहीं बोल रहा कि नहीं है, बट आपको शायद आपने उस क्वेश्चन को परस्यू नहीं किया. ठीक है, आज वो वैसे सवालों का जवाब दूंगा. ठीक है, तो मुगल पीरियड के बाद ब्रिटिश पीरियड शुरू हो रहा है, और ब्रिटिश का अप्रोच बहुत डिफरेंट है. मुगल्स का क्या है, आउटराइट डिस्ट्रक्शन, आउटराइट सब कुछ तोड़ो, जला डालो, काटो पीटो. तो बट ब्रिटिश का अप्रोच डिफरेंट था. आपने देखा है कन्निंग वाइली फॉक्सेस, तो उनका क्या है, इनको बाहर से कितना भी मारेंगे खड़े हो जाएंगे फिर से. आपको पता है ना कितने बार मंदिर तोड़ा, बार वहीं पे मंदिर बनाएंगे लोग. और अभी भी नारा चलता है ना, मंदिर वहीं बनाएंगे. That is the same. This is hardcore Sanatani spirit. मंदिर वहीं बनाएंगे, तुम तोड़ो मैं वहीं बनाऊंगा, right? So they realize कि इनका कल्चर का जो है, it is a bouncing back culture. कितना भी मारो हम फिर से बाउंस बैक होने वाले हैं. So they realized, why not we enter and we create अंग्रेज Indians. हम इनके सिविलाइजेशन के रूट को तोड़ते हैं, इनके फाउंडेशन को तोड़ेंगे, और ये देखने में इंडियंस होंगे, पर उनका जो थिंकिंग है, ब्रेन है, पूरा अंग्रेज होगा. हम में से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे. Sorry, Prabhu, sorry to interrupt, but there's a more related question. I was asking even Gilan Prabhu a couple of days back. Prabhuji, when the Mughal invasion happened, the Hare Krishna. I'm really sorry to interrupt, Prabhu. It was more related to the point what you were saying. Yeah. So we were having a discussion a couple of days back when we were in Yadadri also. The Mughal invasion when it happened, Prabhuji, the strength was how many of them put their leg on Indian soil. Because my thinking, I might be wrong here, they might be less in population when they entered. Yeah. And how come they less number of people? They took advantage of the divisions existing within the Indians. If you see, even I don't know, यहाँ कितने लोग एक मूवी देखे होंगे, आपने देखा तान्हाजी? देखा होगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवी. उसमें जो औरंगजेब का वॉरियर है वो कौन है? वो तो मुस्लिम नहीं था, हिंदू था. मेन जो वॉरियर है, क्या नाम था उसका? यहाँ पे मराठा वॉरियर है. तानाजी तानाजी का एनिमी कौन था जो औरंगजेब ने भेजा था? कितने लोगों को याद है उसका नाम? अरे मूवी देखिए, ये तो याद रहना चाहिए. हिस्टोरिकल मूवी देखिए, हिस्टोरिकल नाम तो याद रखिए. चलिए, ये एक एक्टिविटी है, देखते हैं कौन इसको भूल जाता है. ठीक है, so there was this person assigned by, he was a Rajput. इसको असाइन करता है औरंगजेब. तो राजपूत कैसे औरंगजेब का दास बन गया? So the divisions within Hindus is very convenient to divide and conquer. Or they that much fools. Literally why? That's right. Unfortunately, अभी भी तो है. अभी भी क्या दिमाग की बत्ती थोड़ी ना जली है उनकी. Still they are fighting among themselves. The outsiders are taking advantage. Okay, so where we are, yeah. So British जो थे, उन बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही कमी थे. उन्होंने रियलाइज किया कि इतना भी इनको करो यार, फिर से बाउंस बैक करने वाले हैं. क्लॉक यहाँ पे रखते ना. Just want to see time and be sure कि So they realize कितने बार भी करो, कितने बार भी मंदिर तोड़ो, कोई फायदा नहीं होने वाला है. बेस्ट इनका क्या अप्रोच है? इनके सिविलाइजेशन के फाउंडेशन को तोड़ना है. और फाउंडेशन कहाँ से आता है? हमारे रिलीजन का फाउंडेशन कहाँ से आता है? शास्त्र, स्क्रिप्चर से आता है. स्क्रिप्चर्स को हम क्यों ना अटैक करें? हम एक काम करते हैं, स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेशन करते हैं अपने हिसाब से. मैक्स मुलर पहला काम शुरू करता है, ट्रांसलेशन करता है ऋग्वेद. और मुझे ये चीज देखने में इतना दुख होता है. I mean, sorry to come, I'll come back to English again. So I feel so bad that how come
Indians feel so prestiged. You know, Rig Veda translation, which one I read? I read Max Muller's translation. This is the mood among Indians because they think that a Westerner has to give proper translation of your history, of your literature, of your religion. We don't have Sanskrit scholars, we don't have experts in Sanskrit, but we have to आज भी ऐसा ही है. If somebody gives a commentary on Mahabharat, गोरा है या इंडियन है? पहले वो बताओ. Whether he is a foreigner, okay, his writings on Mahabharata we should take it seriously. This is the unfortunate reality. This is that we have this inferiority complex कि नहीं हम तो हजारों साल से मार खा के जीवित हैं, हमसे कैसे अच्छा कुछ हो सकता है. तो ये लो inferiority complex आपको कहाँ से आता है? It comes from your imperfect understanding of history. So see here, the British when they were ruling India, they realized कि इनके जो text है इनको अटैक करना है. इसको तोड़ेंगे ना, देखने में ये browns हैं, मतलब we were called as browns. ठीक है, we are not गोरे, we are not काले, we are browns. ये देखने में तो browns होंगे, but by their consciousness, by their thoughts, they will be गोरे, they will be whites. तो ऐसा conspiracy, they used to do this kind of conspiracy. He's a famous, not so famous maybe among you, but in academics को बहुत सारे लोग जानते हैं. Raymond Schwab. Raymond Schwab बता रहे हैं कि Indians cannot understand that our religion, their religion, Christianity, is the universal religion for earth, and Indians can produce mere fables and fantasies. You understand how offensive the statement is? इनका तो बस कथाएं हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं. हमारा ही सच्चा रिलीजन है पूरे विश्व के लिए, ये सच्चा रिलीजन हमारा ही. दिस वाज द माइंडसेट. तो उसके लिए क्या करना है? हमारे टेक्स्ट को मिथोलॉजी बोलना है. It all starts from calling our literature as mythology. But interestingly, when you study the history of London, ठीक है, लंदन में there is the river Thames. कितने लोग हैं? How many of you been to London? Okay, quite a few. Interesting. Have you been to Buckingham Palace? ये जरूर जाएंगे guys. कितने लोग? Okay, पहले जो लंदन गए हैं फिर से हाथ उठाइए. मैं देख लेता हूँ कितने नंबर्स हैं. अराउंड 12-13. ठीक है. लंदन आप लोग 12-13 लोग गए हैं ना. आप में से कितने लोग बकिंगम पैलेस गए हैं? हाथ उठाइए. Almost everyone who went to London. ठीक है. How many of you have gone to Buckingham Palace से थोड़ा दूर एक मंदिर है, मित्र मंदिर, 2000 साल पुराना. कितने लोग गए? ये जो मित्र मंदिर है भारत से कैरी फॉरवर्ड हुआ है. ओम मित्राय नमः वेद में आता है. It means it is praying to sun god, सूर्य देव. ये जो मित्र नाम के जो गॉड थे, देवता थे, उनकी पूजा भारत से कॉपी फॉरवर्ड हुई पारसीज के पास. पारसी लोगों से इवेंचुअली कैरी फॉरवर्ड हुआ है ग्रीक्स के पास, फिर कैरी फॉरवर्ड हुआ रोमन्स के पास. और रोमन्स दे वर रूलिंग यूके, यूनाइटेड किंगडम को एक टाइम पे रोमन्स रूल कर रहे थे. तो रोमन्स ने क्या कर दिया? मित्र मंदिर बनाया लंदन में, हार्ट ऑफ द सिटी लंदन में मित्र मंदिर बनाया है. Can you imagine how big this is? Even before the beginning of Christianity in United Kingdom, in London, वहाँ पे सूर्य देव का मंदिर है. कितने लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन? और anybody heard this before? Not heard. सूर्य देव की मंदिर है लंदन में. ठीक है, सूर्य देव का मंदिर है लंदन में. और ये मंदिर का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. There was second world war which happened. So during Second World War, there was bombings. These Allied forces, bombing. There was heavy bombing happening in London. So they bombed this particular place. If you can see here, I'll try to bring my mouse. Prabhuji, can you help me with the stick? I can. हो सके तो देखिए, नहीं तो फिर मैं हाथ से ऐसे दिखाऊंगा. ये देखिए, you can see here. Okay, this one. जो red वाला, you can see this mark here. Okay, so the red mark here is Mitra temple, and that temple is called as Mitrayam, London Mitrayam. The place is called as London Mitrayam. This is the place where 2100-year-old Mitra temple is found underground. How they found it? When the bombs, पूरा bomb blast हुआ था, right? Aggressive bomb blast हुआ. Then they decided, okay, war खत्म हो चुका है, Second World War is over.
Now we have to clean up the entire place and we have to dig the foundation. So when they started digging the foundation, something struck. Then they excavated entire gigantic 3.5 acre land full of temple. 3.5 acre size temple is underground in London city of Surya. Right? And they are coming from there and preaching Christianity to us. So not only in London, the Greeks had carried forward Surya. You see the similarity in the Vedic Surya and the Greek Surya. 4 horses, chariot, and Surya riding that horse. And Surya had one name as Mitra, one name as Helios, and so on. But Mitra was the most commonly known name. If you study history of these Indo-European cultures, the various Indo-European, Greek, Slavic, you will find that one god which is very commonly found among different cultures, it is Mitra. And worship of Mitra was called as Mitraism. Mitraism. It's considering Mitra as a powerful god and worshipping him. So Mitra god, Mitra worship, the most ancient reference to Mitra is not found in any of those literatures of those cultures. It is found in the Veda. Right? The most ancient literature reference is from the Veda. So from here it has got carried forward, went all the way up to the United Kingdom. So, as I said before, it is actually found in Rig Veda, Mitra worship. Okay, so I'll go to the next slide. Now, most interesting. All of you have heard about this country called Turkey. All of you would have heard. I don't think anybody has not heard this place called Turkey. So in Turkey, thank you so much. Yeah. It's much easy. Yes. So all of you would have seen in Turkey. This is even better. Yes. So all of you would have seen Turkey is now 100% converted to Islam. No other religion existed. But 3,400-year-old inscription is found. Inscription. In Hindi we call it as Shilalekhana. Or we say Shilashasanam. In Telugu we say. So 3,400-year-old inscription is found. In that inscription, you see there is one king belonging to the Hittite Vamsha, Hittite dynasty, and one king belonging to the Mitanni dynasty. They are doing a treaty. How do you say treaty in Telugu? Sandhi. Sandhi. They are doing a sandhi. So in that sandhi, they are keeping witness. Sakshi, Praman rakh rahe. They are keeping Praman. Kisko Praman rakh rahe? They are keeping Praman of Indra, Mitra, Varuna. कहाँ पे? टर्की में. आज क्या हाल है? ठीक है. So not only this, यहाँ से भारत से कैरी फॉरवर्ड होके So not only this, Bharat se carry forward ho gaye, it has. So you can see here, this is the history of Bharata as per the mentions in the Veda. Okay. So Veda में क्या होता है? There is a very famous king called as Maharaj Yayati. How many have heard this king's name? Maharaj Yayati. Okay, let me ask, how many of you not heard of the king Maharaj Yayati? Okay, good number. Yes. So Maharaj Yayati is a famous king mentioned in the Vedas. Okay, and Maharaj Yayati had many stories. Interestingly, he was, becoming old, so he wanted to replace his youth with another of his sons. Many stories related to him are very famous. Yayati. So Maharaj Yayati had 5 sons, and I will trace them geographically today. Okay, I'll remove the garden so that I can move around freely. So you can see here. Okay, you can see here. This is Drogyu. So there was one king called as, I think that's good actually. Alchemist. The seminar is more better to stand and give. So you can see here. These are the 5 sons of Maharaj Yayati. Maharaj Yayati had 5 sons. So he gave 5 sons 5 different regions. He gave Puru. This is the Bharata Vamsha. Pandav, Kaurav, right? All these people come in this Puru Vamsha. They got the heartland, heart of Bharat. Indraprastha, Hastinapur, and Western Uttar Pradesh,
right? All that area, central area they got. Anu's got Punjab all the way up till Khyber Pakhtunkhwa, right? And Yadu got Gujarat and Maharashtra, right? And Turvasu got southern India. And Drugyu got Gandhar. Where is Gandhar? Gandhar is Afghanistan. Of course, Afghanistan has multiple kingdoms. One is Gandhar, one is Bahlika, and many more. I'll show you the second. Okay. So Drugyus are one kingdom. So historically क्या हो रहा है? Drugyus and Anus, Drugyus and Purus का बहुत लड़ाई हो रहा है. Drugyus and Yadus का भी बहुत लड़ाई हो रहा है. A lot of conflicts. So at one point of time, what happens? Drugyus decide, there's so much problem here. We have to constantly fight with these people, these Yadus and so on. So the Drugyus leave Afghanistan, Gandhar, and they go far, and they get settled in Europe. So the Drugyus become Druids. Of course, if you ask me, Prabhuji, I need a detailed seminar on this. If anybody wants, I have a research seminar just dedicated for this, where I establish how Drugyus became Druids. But I'm just giving you a glimpse here. So Drugyus, what happened? Drugyus का जो description है शास्त्र में, and Druids का जो cultural evidence archaeology में मिला है, it matches. Like for example, Drugyus, right? They had Brahmanas and Kshatriyas. Both were called as Drugyus. Whereas Anu, Puru, Yadu में ऐसा नहीं था. Brahman का नाम अलग था, उनकी family अलग family थे. Like Vishwamitra Rishis were the Brahmanas, like that. So they had अलग set of Brahmans. But the Drugyus के Brahman भी Drugyu थे, उनका भी नाम Drugyu था. Kshatriyas का भी नाम Drugyu था. तो Brahman Drugyus and Kshatriya Drugyus दोनों batch में निकले and they went and settled in northern Europe. So Drugyus eventually become Druids. तो ये Druids है, इनके culture में there is fascinating evidence which is found. This is Druids, northern Europe, Denmark. Denmark में ये सिक्का मिला है, ancient coin has been found. Anybody can say what this coin is about? Who said this? Very good. Yes. This is, but I said this is not Lakshmi Devi. How do you say this Lakshmi? Elephants, okay. Lotus, okay. What else? Energy, come on. This is your history. Not Mughal history or British history. This is our history. Yeah. So. I don't find anything. Yeah. This is a kalash. Okay. Fine. I mean, this is one of the very sharp audience because generally when I ask this question, I've done this hundreds of times seminar. So nobody generally knows the kalash. Really appreciate it. Yes. Good. Anybody else? Huh? Not exactly. That doesn't substantiate Lakshmi's identity. I'm asking how do you say it? Somewhere tortoise. No, it's not a tortoise. Yes. It is a point. So wonderful. This is again an amazing answer. Lakshmi is the goddess of wealth. So naturally she would be depicted on a coin. Wonderful. Very good. Now we have in history a subject called as iconography. Iconography क्या होता है? You study different forms. ठीक है? You study different forms. ये रूप आकार ऐसा है, इसके hands ऐसे हैं, ये ऐसा weapon पकड़ रहा है, इसके पैर ऐसे हैं. वो iconography होता है. मतलब इसके icon पता है ना? कंप्यूटर में icons होता है. Icon basically is a form. So iconography means form के studies. So iconographic studies में there is only one personality or goddess, only one, nobody else, who is connected with the iconography of lotus, standing elephants, female figure. She is being getting abhishek, and she is being depicted on a coin. History में कोई भी ऐसा figure नहीं है who is connected with elephant and money and being abhishek with elephant. कोई religious figure है ही नहीं, except for Lakshmi Devi. Lakshmi Devi is the only religious figure historically हम देख सकते हैं. She has been depicted on a coin. She's been worshipped by elephants. Abhisheka. She's hanging on lotus. She's the goddess of wealth depicted in coins. Only Lakshmi Devi. Okay. And where this has been found? Denmark. इसके अलावा you can see this concept of Indra. Indra का एक नाम है वृत्रागना.
Anybody heard this name? Indra has one name called as Vritragana. Means why he is called as Vritragana? Anybody can say? Yes, somebody was saying. He killed Vritrasura. And Vritrasura in history we can see Vritrasura is often depicted as like a gigantic snake or gigantic dragon. Many times we can see in literature he is being depicted as a gigantic snake or dragon. ये जो identity है Vritragana, it has been copied into Parsi literature. Parsi literature में Vritragana became Veretragana. Veretragana, मतलब the dragon taming hero. And that was copied forward into Greeks, Hittites and many other culture जो ancient Greek civilization है उसमें carry forward हुआ है. यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है his name is Inar. Indra became Inar and Inar is taming a dragon. Vritragana story carry forward हुआ है. And very fascinating is this found in Turkey. Who has a shaven head with shikha? Anybody here? कोई नहीं. ओके आपने देखा तो होगा you would have seen that people brahmacharis को देखा होगा sannyasis को देखा होगा they have shaven head with shikha. What does it signify? Anybody lift your hands and answer. What does a shaven head with shikha signify? उसका क्या importance है, क्या है significance है, क्या cultural significance है, कौन बता सकता है? Renunciation. Okay, बैठ के बताओ ना, आप बोलने में 2 मिनट चला जाता है टाइम. हाँ ऐसे Not showing arrogance. Not showing arrogance. Okay, yes. Sacrifice and purity. ठीक है. चलिए मैं और specific सवाल पूछता हूँ. सिखा रखने का क्या cultural significance है? What is the cultural significance of having a sikha? Yes. Surrendering to the Guru. Ramen is a social aspect. Surrendering to the Guru. This is spiritual aspect. Brahmarandra. There is Brahmarandra. Scientific aspect. I'm asking cultural aspect. Surrender to Guru. Only That's a philosophical aspect or a practical aspect. Only Brahmanas used to have this. Social aspect. No, not only Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. Krishna used to have shikha. Yes. Educated. Okay, if anybody is uneducated and have shikha, attack him. Okay, anybody else? What is it? Scientific. I would know. Cultural. What is the cultural significance of having a sikha? Study of Vedas. Study Vedas. बहुत पास में आ गए. Yes, very good. नहीं, सनातन में भी कुछ लोग हैं, they shave sikha and say, मैं नहीं मानता हूँ sikha Vedas. कुछ some sannyasis actually shave their sikha and call themselves Sanatans. Okay, anybody else? No, Krishna was not a priest or pujari when he went to learn from his guru. He kept shikha. Yes, anybody else? Used to study. No, grown-up people also get have shikha. He was a disciple. एक प्रभुजी कोई थे, I think बहुत पास में आए थे. He came very near. I am hoping that somebody will complete it. बहुत बड़ा है सेमिनार. जल्दी complete करेंगे तो अगले point में जाएंगे. What is the cultural? Disciple. He was a disciple. मतलब ये disciple answer को और प्रभुजी ने जो बोला दोनों को combine करो वही जवाब. Studying Vedas. Practicing weapons. Exactly. ठीक है मैं बता देता हूँ. The importance of cultural बात कर रहा हूँ, ठीक है? शास्त्र को कोट करके मेरे को डांट करने की कोशिश मत करना. Cultural significance जो है हजारों साल से हम स्टडी करते आ रहे हैं. सिखा रखने का cultural significance ये है कि it signifies कि मैं वेदों को सर्वोपरि मानता हूँ. Accept the Vedas as the ultimate authority. जब वो व्यक्ति सिखा रखेगा, he is indirectly indicating कि मैं वेदास को सर्वोपरि मान रहा हूँ. I'm accepting the Vedas as the ultimate authority. And some जो sannyasis हैं, they don't accept Vedas as authority because they think themselves they became God. So they remove sikha also. That is again another story. But sikha रखने वाला जो भी व्यक्ति है, basically it means that I am accepting Vedas as the ultimate authority. ठीक है? अभी अगर ऐसा statue जो है, sikha रखने वाला statue is being found in Turkey. What does it signify? They accepted Vedas. Accepted Vedas. Vedic culture was followed there. What is the situation now? So, yes.
Interesting. One of the very interesting answers so far came to me. ऐसा आंसर जनरली लोग इतना सोचते नहीं है. It's very good. एक ऐसा भी तो हो सकता है भारत से कोई गए होंगे, यहाँ से सिक्का स्टैचू बना के VRL पार्सल में पैकेजिंग करके लेके गए और वहाँ पे उन्होंने खुदाई कर दिया कि हम उसको निकालें, और ऐसे भी हो सकता है. Not that, Yeah. but long time back and say, in those days also you would have gone. The point is, generally statue moving is not common thing. Moving of statues for so long, especially from India to Turkey, it is not a viable thing. Okay, so coming back to the point, ये स्टैचू कहाँ मिला है? टर्की में मिला है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टर्की में सनातन धर्म था, वेदों को लोग मानते थे. ठीक है. और आज के बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, पाकिस्तान के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इमरान खान. And he belonged to one tribe. पश्तून, पठान, पख्तून, he called himself as a Pathan. पता है आपको पठान नाम भी वेद से आता है. A Pathan's name comes from the Veda. ये देखिए. ऋग्वेद 7th book 18th chapter श्लोक number 7 पख्तून्स. खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ना है अपना नाम. वो नाम वेद से आता है. और ये पख्तून नाम जो है फिर महाभारत में भी रिपीट होता है. ठीक है. तो पश्तून नाम जो है, पख्तून नाम कन्वर्ट होकर पश्तून हो जाता है, वो बन जाता है पठान. और उस नाम पे मूवी रिलीज करके वो व्यक्ति पठान. ठीक है. उसके अलावा देखिए पार्श्वा, पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया, वीडियो गेम बहुत लोगों ने खेला होगा जब आप आज की एंसर जो भी है. पर्शिया, पर्शिया नाम कम्स फ्रॉम पार्शु, पार्श्वा. ये भी वेद में पाया जाता है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे नाम जो भी आप देख रहे हैं रेस फ्रॉम द वेद. अब ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप ऊपर देखिए ध्यान से, पता नहीं कितने लोग देख पा रहे हैं. ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? बाल्ख. अब ये बाल्ख नाम कहाँ से आया? अफगानियों से जाके पूछिए. अफगानिस्तान में ये अमेरिका एंड तालिबान का वॉर चल रहा था एंड 10-15 दिन में अमेरिका वो अफगानिस्तान आर्मी को उन्होंने खत्म किया. दे टुक ओवर द एंटायर कंट्री. तो बाल्ख नाम के शहर में, डिस्ट्रिक्ट में बहुत फाइट चल रहा था. बाल्ख अफगानिस्तान में, नॉर्थर्न अफगानिस्तान में बाल्ख नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है. ये बाल्ख नाम कहाँ से आया जी? Amazing. She needs an applause. तो जनरली क्या है, इसको समझाने में मुझे 3-4 मिनट 5 मिनट लग जाता है. बाली का कौन है, देवों की शान. मैंने सीधा बोले अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बता नहीं मैंने सही यार क्या. तो बाली का बेसिकली ये कौन है? शंतनु के बड़े भाई. शंतनु राजा बने थे, पता है आपको? शंतनु बड़े भाई कौन थे उनके? देवापी. देवापी का बॉडी में प्रॉब्लम था बोल के वो क्या कर रहे हैं, इट बिकम्स अ रिनंसिएट, चले जाते हैं. तो दूसरे भाई शंतनु राजा बनते हैं. तीसरे भाई कौन है? बालिका. और बालिका के मदर साइड जो फैमिली है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है. तो बालिका क्या बोलते हैं, ऑलरेडी इस फैमिली में कितना प्रॉब्लम है. बड़े भाई को उन्होंने पॉलिटिक्स करके निकाल दिया या प्रॉब्लम करके निकाल दिया और ये ऋषि बन गए, मुनि बन गए और शंतनु राजा बन गए. इसमें मैं भी यहाँ पे खड़ा रहूं तो मुझे भी प्रॉब्लम आएगा. लेट मी गो एंड गो टू माय मदर साइड किंगडम. तो बालिका गोज ऑल द वे अप टिल अफगानिस्तान. वहां पे बन जाता है बालिका किंगडम. और बालिका किंगडम से नाम आता है बाल्ख. And Afghanistan they don't know how the name came Balkh. Balkh is connected to Mahabharata. कुरु वंश के लोग वहां जाके सेट हुए हैं. आज वहां के लोगों से पूछिए क्या आपका हिस्ट्री है, nobody has any clue. और ये चीज यहाँ पे भी हो सकता है. यहाँ भारत में कोई विभाजन हो जाएगा ना, division, if any division happens in India, suddenly the people there will be like, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया. मंदिर नहीं यहाँ पे बनने देंगे. तुम सनातन धर्म फॉलो कर रहे थे यार हजारों साल. मंदिर यहाँ नहीं बनेगा. सो ऐसे हो गया. बाल्ख तो कौरव कुरु वंश के बाल्ख अफगानिस्तान में थे, वहां पे राज्य करते थे. आज क्या हाल है? ये है हिस्ट्री. आंखों के सामने इतिहास मिटाया जाता है. ये है क्या है सबको पता है, बामियन बुद्धा का स्टोरी फिनिश.
तो बट उसी अफगानिस्तान, बामियान इज इन अफगानिस्तान, ठीक है, उसी अफगानिस्तान में सिक्के मिले हैं जो मैंने पहले बताया था लास्ट के बिगिनिंग में। अभी इस सिक्कों का डिस्क्रिप्शन आपको करूंगा, बहुत ही फैसिनेटिंग होगा, ध्यान से सुनना। ये देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ना यहाँ पे खड़े हैं, हाथ में एक चक्र लेके खड़े हैं, और यहाँ कोई भी चक्कर लेकर सुदर्शन हो जाएगा तो कृष्ण हो जाएंगे। मैं भी चक्कर खड़ा हो जाऊंगा तो जैसे मेरे नाम में चक्रपाणी है, तो चक्कर लेके कोई भी खड़ा हो जाएगा फिर चक्रपाणी दास। तो जो भी चक्कर लेके खड़ा है वो भगवान थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है वासुदेव चक्कर लेके खड़ा है। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जब लड़ाई करते हैं, वासुदेव नाम के कोई राजा थे, वो कोई भी चक्कर लेके उससे अच्छा लड़ाई करते हैं, ऐसे भी हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? ये कृष्ण नहीं है, अफगान के एक राजा थे जिनका नाम है वासुदेव, और हाथ में चक्कर लेके वो फाइट करते थे, ऐसे भी हो सकता है। मतलब बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, तो उनको आर्गुमेंट बता दूं। बट इस सिक्के के पास ही और एक सिक्का मिला है, ये सिक्का देखिए यहाँ पे, इसमें लिखा है समकर्षणा, इंडो-ग्रीक स्क्रिप्ट समकर्षणा, और यहाँ पे हाथ में क्या है? क्या है? यहाँ पे क्या है? गदा। गदा। अभी हल का इंपॉर्टेंस है, बलराम जी के हाथ में हल क्यों है? एग्रीकल्चर। ओके, वेरी नाइस। हलधर नाम भी है ना बलराम जी का, हलधर, हल पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। समकर्षण नाम के, If you don't mind, you are very close to the red scroll. Again and again. Please. सो समकर्षण नाम के व्यक्ति हाथ में हल पकड़ के खड़े हैं, ये देखिए, और समकर्षण नाम के व्यक्ति हाथ में गदा पकड़ के खड़े हैं। बलराम जी का और गदा का कोई संबंध है? क्या संबंध है? For killing enemies. रिकॉर्ड करने में डर लग रहा है क्योंकि कहीं वायरल तो नहीं करेंगे। He's a teacher. He taught He's a us. teacher. Yes, from yes. He's the teacher of Instead of गदा, किसको गदा सिखाते थे? Teach गदा. So imagine संकर्षण सिक्के, is a संकर्षण coin found next to Vasudev coin. अभी आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं. You can always say, "नहीं, this is not some Krishna. This is some king called Vasudeva. He also holds chakra. His name also." You can bluff like that. But this one found next to this, ये बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियर है, हल है और गदा है। बलराम जी ये तो और कौन है? समकर्षण बलराम जी का एक नाम है, अनेकों शास्त्रों में पाया जाता है। तो समकर्षणा, हल, गदा, वासुदेव विद चक्र। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये लिखा है एगेटोक्लेस। एगेटोक्लेस कौन है? राजा का नाम। अभी एक व्यक्ति को आप सिक्के में दिखा रहे हैं तो कुछ तो उनका इंपॉर्टेंस हुआ होगा, उनकी मर्यादा हुई होगी, मे भी पूजा भी हो सकती है कि हुआ होगा। ये जो राज्य था वो था गंधार। गंधार से कौन आई थी? गांधारी। वहां के कौन उनके भाई थे? शकुनी, गंधारी, गंधार जनपद, गंधार राज्य, वहां से आई गंधारी। अभी क्या हाल है? तो ये हिस्ट्री समझना जरूरी है, ये कहीं भी भारत के अंदर भी रिपीट हो सकता है, और हो भी रहा है, कश्मीर में हो रहा है। हमारे जो मंदिर हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, बहुत ही पुराने, जो महाभारत से रिलेटेड हैं, आज हमारे आंखों के सामने जा रहे हैं। मैं आपको एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक दिखाऊंगा, कृष्ण बलराम का बहुत ही पुराना एक आर्टिफैक्ट, उन्होंने पूरा उसको डेमोलिश कर दिया, 2200 साल पुराना, वो भी दिखाऊंगा। ये तो आप सबको पता है, सोमनाथ मंदिर कितने बार 16 बार डेमोलिशन, 16 बार रिकंस्ट्रक्ट किए, डेमोलिश होना नहीं देना था। इसके भी हिस्ट्री क्या है आपको, अगर आपको बताऊं, ये भी हमारे शास्त्रों को मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसअप्लाइंग का कारण है। सोमनाथ मंदिर टूटा नहीं होगा, एक्चुअली इतने वीर शूर महान क्षत्रिय थे, कैसे हुआ? तो सोमनाथ का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था एल बेरूनी। कितने लोगों ने सुना एल बेरूनी? कुछ ही लोगों ने सुना होगा। गजनी कितने लोगों ने? सब लोग उठाएंगे हाथ। गजनी सब लोगों ने नाम सुना है। गजनी का कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, वाज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कोर्ट ऑफ गजनी हु यूज्ड टू राइट अबाउट मेनी थिंग्स। ही वाज बेसिकली अ राइटर, डेटा कलेक्टर, डेटा साइंटिस्ट है यहाँ से, उस टाइम का डेटा कलेक्टर था, डेटा साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा उसको, उसने बहुत अन्याय किया। So he used to collect data about India. भारत के अंदर आया, he collected all the data, how kings are fighting, they won't fight in the night, they won't attack old people or women or children,
ये पूरा बीच पे वार नहीं करेंगे। हमारा जो धार्मिक प्रिंसिपल्स है, कैसे कहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, ये दो राजाओं के बीच में प्रॉब्लम है, all this analysis he did, complete analysis. Then what he did? He went and reported it to his master Gajini. Gajini expertly used his information and came and destroyed Somnath temple, which is directly connected to Krishna. You know, Krishna, इसको पता है, directly this is connected to Krishna. देखते हैं आपको टाइम दूंगा स्लैश एंडिंग तक. There was one very important character in Krishna's pastime who has an intrinsic connection with this temple. आप find out कर. ठीक है. ये देखिए, ये है प्रहलादपुरी, मुल्तान. मुल्तान नाम पता है आपको? मुल्तान पाकिस्तान में मुल्तान है, सुना होगा? मुल्तान comes from मुलस्तान. मुल्तान में सांबा, son of Krishna, used to worship this deity. आज क्या हाल है? English. Yes, remember, GTV name. Okay, keep it in English. Yes. Vedic Parsi conflict. So, one thing we can see is that there are, when you study the various civilizations, you find that there is impact on different civilizations in different levels. Like, for example, the first diversion which started from India is through the Parsis. Indra in Vedas is godly. Indra in Vedas is godly, is a devata. But if you use the word Indra in the Parsi literature, Indra means a demon, Asur. Can you imagine? So Indra here is godly, Indra became Asur. And you see, Asur means demon, right? But in Parsi culture, Asur means God. Ahura. Asura बन गया Ahura. Ahura becomes God. So what I'm trying to say is, यहाँ से culture reverse culture हो रहा है, opposite culture हो रहा है, and they start developing their civilization from there onwards. Okay. And you see what happens in Parsi culture, the names also change. Jaimini, one famous rishi in our scriptures, he says, all the languages which you see on this planet are nothing but contaminations or mispronunciations of Sanskrit. Like for example, if you see Saraswati. So Saraswati, when it went to Afghanistan, it became Harakpati. वहाँ पे there is one river which they call as Harakpati. Ask the Afghans why you call it a Harakpati. It's from Saraswati. Sa. They cannot pronounce the Sa sound. Sarayu became Harayu. Sapta Sindhu became Hapta Hindu. Sapta Sindhu became Hapta Hindu. After बताओ Hindu. Hindu becomes Hindu. Greeks take that word and they adopt it further. It becomes Hindu, then it becomes Indi, then it becomes Indica, then it becomes Indus. अरे यार, कहाँ पे इंडस आया अभी? कि मैं कितना स्टोरी लाइन बिल्डअप करते जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पहले हिंदू था, फिर हिंदू था, हिंदी, इंडिका, और उसके बाद क्या हुआ? इंडस। इंडस कहाँ से है? वो तो अलग डाइवर्शन है। So Indica से eventually आता है India. The word India comes from Sindhu in multiple derivations. ठीक है? तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ. अभी मेन चीज आज पे आ रहा हूँ कि महाभारत इसमें हुआ था या नहीं हुआ था. So where do we find evidences for this great war called as Mahabharata? So we find evidences for this Mahabharata in inscriptions. So what is an inscription? Inscription means you have something like a wall here. Okay? You have a wall. We are carving on it and writing. So why do they use walls or pillars or stones? Because they want it to be preserved for thousands of years. Right? If you write it on a literature, on a paper to नहीं था उस time पे, like if you write it on a palm leaf cannot survive for 5,000 years, 3,000 years. It has to be recopied. Right? So they used to put inscriptions. So that thousands of years people will keep track of it. Inscriptions. So this is the most fascinating inscription which proves how old is Krishna Bhakti, Krishna consciousness. Now, how many of you have seen foreign devotees? White, gore devotees जो हैं, almost every, बहुत लोग नहीं देखा है शायद, हाँ नहीं होता है. कितने लोग नहीं देखा है? Have you not seen? Like online में भी देखे होंगे, Facebook, YouTube पे you would have seen foreign devotees, white devotees,
They are having shikha, they are applying tilak, they are dancing, saying Hare Krishna. So we are fascinated. Oh, देखो ना, ISKCON people are bringing so many foreigners into Krishna consciousness. Wow, wow. Foreigners are becoming devotees. This is the first time in history that foreigners are becoming devotees. Yes, it is true that it is the first time that so many foreigners have become devotees. But it is not true that foreigners are becoming devotees for the first time now. They were foreign devotees even before 2300 years. This is a 2300-year-old Greek traveler. His name is Heliodorus. Heliodorus नाम का एक Greek traveler है. Greek है. और hardcore कृष्ण भक्त था. वो क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है. So basically there is an ancient temple in a place called as Vesnagar. मध्य प्रदेश में there is a place called as Vesnagar. ये कहाँ पे पड़ता है? It comes in Vidisha. How many of you heard this place? Vidisha. Definitely you would have heard Vidisha. In Vidisha there is a city called as Vesnagar. In Vesnagar, if you go, definitely visit this place. 2,300-year-old pillar inscription. There is one pillar. On top of it, they have written, "This Garuda pillar of Vasudeva." मैं हिंदी इंग्लिश में थोड़ा करूँगा so that it becomes more interesting. So ये Garuda स्तंभ है. This Garuda pillar has been constructed by Heliodorus. By me, Heliodorus. He calls himself as a Bhagavata. So there is Bhagavad, two meanings. There is two meanings of Bhagavad. One is a person Bhagavad and the book Bhagavad. Person Bhagavad means the devotee hai, he is a person Bhagavad. The book is the book Bhagavad, Srimad Bhagavata. So he calls himself as a person Bhagavata. He says I am the person Bhagavad. I am the person Bhagavad. I am coming from Takshashila. He cannot pronounce Takshashila. How is he saying? Takshashila. Takshashila. Okay, how many of you know the history of Takshashila? How it is connected to Krishna or Mahabharata? Who can say? Takshashila is connected to Mahabharata, you know? Yes, who can say? Takshashila is the place where Takshaka Naga was living. Right? They wanted to kill Takshaka Naga. Janmejaya Maharaj wanted to kill Takshaka Naga because he had killed his father. Takshashila. Right? That word became Takshashila and eventually became Takshila, Taxila. British used to call it as Taxila. अभी कहाँ पे है Taxila, Takshashila? पाकिस्तान के पास. Hardcore Mahabharata site lost to Pakistan. So the Greek ambassador who came from, he came from Takshashila to meet Kashi king, the king of Kashi. और ये जो मंदिर है, it's a very ancient temple, बहुत ही पुराना मंदिर है. मंदिर जो है पूरा टूट के पूरा अंदर दबा हुआ है नीचे. मंदिर के सामने जो पिलर है उसको प्राउडली प्रोक्लेम कर रहा है, मैं भागवत हूँ, मैं आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस टेंपल फॉर माय डियर लॉर्ड. देवों के देव महादेव नहीं, देवों के देव वासुदेव, देवों के देव वासुदेव के लिए मैं यहाँ पे मंदिर बना रहा हूँ. कौन बोल रहा है? ग्रीक ट्रैवलर बोल रहा है. तो दुनिया के सबसे पुराने फॉरेन डिवोटी है शायद, दुनिया के सबसे पुराने फॉरेन डिवोटी. इंस्क्रिप्शन में लिख के गए हैं कि आप सब लोग देखें ये चीज. ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल है, बट फॉरेन डिवोटी एक आध दो थे पहले भी. 2300 साल पहले एक विदेशी ग्रीक भक्त. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग. आपसे देखते हैं, आपसे आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी होगा. ठीक है. ये ग्रीक ट्रैवलर है जिसका नाम है मेगास्थेनिस. कितने लोगों ने सुना है मेगास्थेनिस का नाम? मेगास्थेनिस ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका. इंडिका नाम इवेंचुअली बन जाता है, क्या बन जाता है? इंडिका बन जाता है इंडिया. इंडिका becomes India. The word Indica becomes India. That's how this country got the name India. The word India has no damn meaning, for your information. There's no etymological, historical, grammatical backing to it. It is a derivation from multiple steps from the word Sindhu. Okay. Now coming back to the point. This person comes to India, Bharat, and he writes a book called Indica. He gives a very fascinating historical detail. I don't know if anybody of you would have heard this. He stays in the court of a king called as Chakrapani. Chakrapani. Who is Chakrapani? कौन है ये Chakrapani? कौन है? मतलब नाम इतना दूर से आ रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते. You can't write the names properly. Chakrapani. What is Chakrapani? Chandragupta Maurya. Chandragupta. Very good. I mean, I'm very fascinated. यहाँ audience आप लोग बहुत ही quick answers and correct answers है. Chandragupta. Chandragupta जो शब्द है it becomes Chakrapani. So he stays in the court of a king called as Chakrapani.
अभी oversight की देता है. What is the main point? He says, I am coming to a city which is called as, देखते हैं who says quick answer ना. Base में हो गया complete है. Base में previous slide है, अभी different है. Base में column वो Heliodorus है, अभी Megasthenes है. ठीक है? तो Megasthenes की किताब में Megasthenes is saying that I am coming to a city which is called as Methora. 2300 साल पुराना रेफरेंस है. देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा. मैं एक शहर पे आ रहा हूँ जिसका नाम है, the city's name is called as Methora. Obvious, ठीक है? बहुत सिंपल है, कोई बता देगा, ठीक है? And in Methora there is a river. And he doesn't say Yamuna. He says the river's name is Jobares. Jobares. Jamuna becomes Jobares. Quantity they choose. Pronunciation नहीं आता है गुरुजी. बेचारे मुश्किल से संस्कृत प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है? So Jamuna becomes Jobares. So मेथोरा नाम के शहर में जोबारेस नाम की नदी बह रही है. मतलब मथुरा नाम के शहर में यमुना बह रही है. क्लियर? विद क्लियर है. अगले हिस्टोरिकल डिटेल पे जाते हैं. वो बता रहे हैं, he says, next detail he gives, he says there are a group of people, they are called as Sorsenoi. What is Sorsenoi? Rajvasis and Sorsenoi शब्द का कोई connection नहीं. साधु नहीं. No. Can you repeat again? Sorsenoi. Sorsenoi नाम के लोग यहाँ पे रहते हैं. प्रभुजी को क्लाप करिए. नहीं. शूरसेन शब्द जो है वो बन जाता है शौरसेन. मतलब शूरसेन वंश के, of the शूरसेन, that becomes शौरसेन. तो शौरसेन becomes Sorsenoi. मतलब ये भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं है. शौरसेना becomes Sorsenoi. अभी तीन चीज क्लियर हो गया. मेथोरा नाम के शहर में जोबारेस नदी बह रही है. And there are a group of people who are called as Sorsenoi. मतलब शूरसेन वंश के लोग. शूरसेन वंश के लोग कौन थे? कितने लोग बोल रहे हैं शूरसेन वंश के लोग यादव थे? राइट? शूरसेन लोग यादव थे, राइट? शूरसेन वंश के लोग यादव थे या कौरव थे? Why? Because शूरसेन वंश जो है, it is यादव वंश. But in Yadavas also there are multiple branches, Andhaka, Vrishni, and so on. Multiple branches there. So why are the Yadavas of Mathura calling themselves as Sorsen, Shursen? Why? Anybody can answer? Mathura was ruled by King Shursen. That's why. No, I am saying when the Greeks came to India, listen carefully, you are coming closer. When the Greeks came to India, they are saying that the Shorsena people are here. Because they were the people who were working for the Vasis of King Shursen. Closer, but not yet. Yes, anybody else can say? Why are Shorsenas referred in Mathura? Why not other Yadavas, Andhaka Yadavas and so on? Mahabharat आपने पढ़ा होगा. Clue दे रहा हूँ. Submergence of Dwarka. Then you can answer this. Dwarka submerging. he was Yadava because Shursen was their main king. Closer but not yet. Yes. Yes, but exactly. How do you say why only Shursen Vamsh is being mentioned there? Why not Andhakas and others? probably They are already left, I think. They are other. So let me answer. Maybe they Yes, last time Mother. Yes. Almost done. Mother, you will get appreciate. So the point is, what is the point? Is that आपको पता है the Dwarka got submerged. It was built on a island. reclaimed land. It was not exactly like a strong surface. It was a reclaimed land. That's why if you see in Mahabharat, पूरा description है कैसे sea से land reclaim करके बना रहे हैं द्वारका. And ये कृष्ण का लीला है. Krishna's pastime. He wants to use the land temporarily, and when he leaves, he wants to submerge, finish. ठीक है. So now what happens is that Dwarka got submerged.
So Yadavas, they are watching Dwarka getting submerged. Mainly, Krishna's descendants are all watching it. And who was the main descendant? Vajranath. Vajranath is being installed as the king in Indraprastha. You all know the story, right? Indraprastha में he is being established as the king. Arjuna लेके जाते हैं, establish करते हैं. और कौरव, अर्जुन वगैरह, they all पांडव जो हैं, they settle in हस्तिनापुर, they take over हस्तिनापुर और इनको इंद्रप्रस्थ दे देते हैं. Okay? हस्तिनापुर ऊपर है, इंद्रप्रस्थ नीचे है. Eventually time forward में क्या हो रहा है? तो वज्रनाथ के वंश में आ रहे हैं. They are coming and settling back to Mathura. Why? Because वो उनका ancestral land है. वो वहाँ पे छोड़ के, why they left Mathura? Why they left Mathura in the first place and went to Dwarka? Jarasandha was constantly attacking. They had to leave Mathura, settle in Dwarka. So then from Dwarka they are coming back to Indraprastha, he is becoming the king. And eventually in due course of time, Vajranava's descendants are coming and settling in Mathura, back to their ancestral place. Why not they call themselves as Yadavas? They can. Why they are calling themselves as Shursen, Sorsen? It's because they are identifying their connection with Krishna. Because when you say Shorsena, वो कृष्णा के लिंकेज में अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए आप देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जैन लिटरेचर में भी ये नाम आता है, शूरसेन जनपद. Because they want to refer not to Yadava, यदु को छोड़ो, हम कृष्णा के हिस्ट्री से कनेक्ट हैं, we are Krishna's descendants. तो इसलिए they refer to as Shorsena. इसीलिए जो ग्रीक ट्रैवलर भारत के अंदर आ रहा है, he is referring कि यहाँ पे मेथोरा नाम के शहर में जोबारस नदी बह रही है, वहाँ पे शूरसेन वंश के लोग रह रहे हैं. तो ये ट्रेलर है, मेन चीज अभी बताता हूँ. ठीक है, ये शूरसेन लोग है ना, एक व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं. They are worshipping a person. His name is Heracles. ऋषिकेशा. ऋषिकेशा Heracles. सिमिलर दिख रहा है. हरी किसने बोला? Very close, but not exactly. Yes, Heracles. हरे कृष्णा, बात खत्म. Okay, Heracles कहाँ से आया होगा? Heracles. देखिए, फिर से आपको I am explaining the sequence. There is a city called as Methora. There is a river in that city by the name of Jobares, and there is a group of people called as Shorsenoi. They are worshipping a person, a god, whose name is Heracles. नहीं बोल दिया इंद्रा को हेराक्लेस को सिमिलरिटी दिखा नहीं है ना. हाँ, यस, हेराक्लेस शब्द कहाँ से आया होगा? आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो ग्रीक से चाइनीज आते थे ना, they cannot pronounce many things properly. एक ब्यूटीफुल शहर था जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ. So टॉलेमी के बुक्स में क्या करता है? इंदोपास. और स्थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में कितने लोग सुना है? थानेसर. कुरुक्षेत्र में है ना थानेसर. थानेसर नाम कहाँ से आता है? स्थानेश्वर से आता है. स्थानेश्वर, थानेसर, थानेसर से बन जाता है थानेसर. तो स्थानेश्वर महादेव बहुत ही फेमस शिव मंदिर है वहाँ पे कुरुक्षेत्र में. तो ये जो चाइनीज ट्रैवलर आ रहे हैं, युआन फ्रॉम पालियन वगैरह चाइनीज ट्रैवलर्स हैं, इतना सुंदर नाम है स्थानेश्वर. बोल सकते हैं ना? पता क्या बोलते हैं? सातानी तो बोलो. स्थानेश्वर को बोलते हैं सातानी सो. ऐसे उनका मिसप्रोनाउंसिएशन होता है. तो मैं ये पूछ रहा हूँ, हेराक्लेस नाम का जो गॉड है जिसकी पूजा हो रही है मेथोरा शहर में, ये कौन है भाई? और शूरसेन लोग, देखिए शूरसेन वंश के लोग किसको पूजा करेंगे? ऑब्वियसली कृष्णा. और हेराक्लेस और कृष्णा तो कुछ सिमिलरिटी दिख ही नहीं रहा है. कृष्णा के कोई भी नाम से और हेराक्लेस में सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है. हरकुलिस तो मैं मतलब आप बोल रहे हैं कि शूरसेन वंश के लोग हरकुलिस की पूजा करते थे, ये तो कमाल हो गया. मतलब आप क्या बोल रहे हैं? ये बेटा है ना, बाप के जैसे दिख रहा है, तो बेटा बाप होगा. ये नहीं है आंसर. यस, हेराक्लेस शब्द जल्दी बताइए, बहुत सारा डेटा है बात करने का, फिर इसी में कंप्लीट हो जाएगा. पास बात आगे बढ़ो. ठीक है, हेराक्लेस शब्द जो है ध्यान से सुनना, देखते हैं कितने लोग उसको ध्यान से सुनना. ध्यान से, हेराक्लेस ये जो शब्द आता है एक संस्कृत शब्द से. अभी आपको इसको साथ साथ पढ़ना है. हेराक्लेस और सेनोई साथ साथ पढ़ना. अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ,
इसको संस्कृत में सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे होगा, देखना। हरि कुल ईश शौर से नॉय, समझ पा रहे हैं? हरि जो शूरसेन कुल के ईश हैं, शूरसेन कुल के ईश कौन होंगे? हरि होंगे, कृष्णा। हरि कुल ईशा, हरि कुल ईशा, हरि कुलीस, हेराक्लिस। तो ये है हेराक्लिस। हेराक्लिस है, वो शब्द आता है हरिकुलीश, हरिकुलीश शौर से नॉय, ठीक है। शूरसेन कुल के जो ईश हैं हरि, हेराक्लिस, वो शब्द वहां से आता है, ठीक है। तो हेराक्लिस का बहुत स्टोरीज बताता है, मेगास्थनीज बोलता है यहाँ पे हेराक्लिस होता है। एक तो 130 generations पहले हेराक्लिस यहाँ पे रहते थे। He is giving historical data also to trace Heraclius lineage, okay, and many other things in details. I am not going into this deeper, but Heraclius had too many similarities. ये है ग्रीक कल्चर में भी हेराक्लिस अपना ओन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता गया, मतलब भारत से उसने बहुत से, देखिए ग्रीक में भी गॉड था जिसका नाम था हेराक्लिस। वो हेराक्लिस कन्वर्ट होके इंग्लिश में बन जाता है हरकुलिस, और भारत का जो हरकुलिस है, जो सच्चा हरकुलिस है, वो है कृष्णा, ठीक है। तो इन हेराक्लिस का और इन हेराक्लिस का भारत, अभी जो ग्रीक ट्रैवलर आ रहा है वहां से, उसको क्या लग रहा है, देखो हमारे हेराक्लिस को और इनके हरि को कितने सारे सिमिलरिटीज हैं, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम हरि, और हेराक्लिस बोल देता है, समझ पाए? तो इसलिए हमारे हरि का उसने नाम रख दिया हेराक्लिस, समझ पा रहे हैं? हेराक्लिस और से नॉय, हरि कुलीश शूर से, ठीक है। और ये जो हरि है, ये कालिया नाम को डोमिनेट करके कंट्रोल करते हैं, और ये जो हेराक्लिस है, ये भी नाग को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। ये नाग का नाम है हाइड्रा। ये हाइड्रा मींस क्या है? हाइड्रा, ठीक है। कालिया कहां पे रहते थे? वाटर। सो इंटरेस्टिंग ये चीज है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं बिफोर वी प्रोसीड। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई सवाल, प्रश्न, ऑपोजिशन, कुछ भी है आप पूछ सकते हैं। ओके, अब तक कोई सवाल? यस, आनो चांस ही नहीं दे रहा, ठीक है। यस, अभी तक कोई सवाल? Mapping the reference names, the original names. Will this not be refuted by atheists? Like you are saying that Methodist is How else can you explain it? Everybody, जो भी एथिस्टिक स्कॉलर है, सब मानता है कि मथुरा ही है, हर कोई मानता है, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को। जो वायरस, जैसे गंगा, कितना सुंदर नाम है गंगा, गैंजीस, क्या गैंजीस होता क्या है? और हमारे इंडियन जो भी जाते हैं विदेश में, व्हाट इज योर मोस्ट होली रिवर? गैंजीस, गंगा बोलिए, सुंदर सा नाम है। तो ये बेसिकली डिराइव्ड है, दिस इज ऑब्वियस एक्सेप्टेड कि मथुरा जो वायरस जमुना है, कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट से भी क्लियर है, शॉर्ट से क्लियर। यस, कोई सवाल, प्रश्न, लड़ाई? यस, एनीवन? ऑपोजिशन? यस। Prabhuji, how can this word Heraclius match with हरि कुल ईशा शौर से नॉय, हरि जो शूरसेन कुल के ईश हैं, ये वहां पे रेफरेंस दिया गया है। हरिकुलीश, हरिकुलीश को साथ पढ़िए और उसको ग्रीक, आप ग्रीक बन जाइए, आपको हरिकुलीश नाम का सुंदर शब्द प्रोनाउंस करना नहीं आ जाए, हेराक्लिस, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आगे सवाल हम शुरू करते हैं। So right now, like we have so many transportations like so that like they can travel anywhere. But Hindus chariots. So how long they can travel? They can travel. Chariots can travel thousands of kilometers. No problem. जाएंगे, एक जगह पे रुकेंगे, वहां पे थोड़ा साइकिल हो जाएंगे, then they move on. Quite possible. ठीक है?
Okay, now the question to you. Let's see who can answer it. I am telling you, Mahabharata is just 1,000 years old. You know why? Because the oldest manuscript of Mahabharata is just 1,000 years old. Okay? Oldest manuscript समझ रहे हैं? Palm leaf manuscript. Oldest manuscript is 1,000 years old. And therefore Mahabharata is 1,000 years old. Please count to me. भगवत गीता है 1,000 years old. उसके पहले भगवत गीता के नाम पे चीज कोई था नहीं. Manuscripts very good answer. Manuscript का इतना लाइट नहीं होता है. ठीक है और yes anybody wants? Sorry. My question is different. My question is the oldest manuscript of Mahabharata is 1,000 years old. How do you say Mahabharata is much ancient? Just now you have answer. Just now you have said regarding there was a kingdom before 2,300 years ago. Only we have a disciple of Lord Krishna, and he also stated previously there is a lineage of 131. Yeah, that is he is accepting Krishna as historical. That is I also accept. Okay, I accept Krishna as historical. But Mahabharata text जो है वो कितना होगा? That is the question. Yes. So on active participation, आप one of the best audiences I have seen. इतना intellectual smart answer देते हैं, पर बीच-बीच में थोड़ा relax हो जाते हैं. Spirit रखिए, तभी और interesting अभी build up होने वाला है. Yes. Maybe the older manuscripts might have gotten unreadable. They written it again. Might have written again and again. I need a definitive logic. I don't need might or may. Definitely tell me what is the reason or how Mahabharata is much ancient. Yes. Two knows Vani, okay, but still it doesn't convince me. Okay, anyone else? Yes. It had a mention in Vedic scriptures. Which scriptures? So, yes, anybody else? Okay, evolution of languages happened, but that is nothing to do with how old is Mahabharata. What is the proof for this understanding? There is a history of language, a lot of proofs around that. Yes. So the sync with that timeline, you see the language in which most of the people can converse and understand. Yeah, but that has nothing to do with what I'm asking right now. You are speaking of scripts. I am speaking of the message itself. So it's written only then. Scripts can change, but the language cannot change. Okay, scripts can change, but the language need not change. Okay? What you are doing is a different subject matter altogether. Scripts. We are not speaking of scripts. We are speaking of Mahabharata, shlokas itself, how old they are. Yes. हाँ हो सकता है, but still they don't survive for 2,000, 3,000, 4,000 years. Survive नहीं करते. कुछ भी हो गया भी इतना 5,000 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है. इसीलिए तो बोला जाता है भगवत गीता मिथोलॉजी है जो बाद में क्रिएट किया गया था. Okay, but still I need some historical reference to prove that Mahabharata is much ancient, not 1,000 years old. Because oldest Mahabharata manuscript 1,000 years old. Yes. Prabhuji, when did we persecute the information to the master? How many years ago? I didn't even understand what. No, the person you were telling who told Mathura as a different. That is Greek literature. The Greek literature को सबको ही blindly मान लेंगे क्योंकि वो Greeks ने लिखा है ना. हमारे में सब पूरा स्कैनिंग चलता है. हमें एक चीज का एविडेंस देना पड़ता है. I am asking how many years ago it happened? 2,300 years ago. So when he told it 2,300. But that doesn't have nothing to do with Mahabharata. No, because Prabhuji, that means already this pastime. I accept Krishna is historical, but I want proof that Mahabharata, Bhagavad Gita is much older. When Krishna was there, that means. She's trying very nice, we should appreciate. Yeah. That means Mahabharata was there, means all the Pandavas were with Krishna. They were. Maybe Krishna is historical, but Pandavas were created later. But Prabhuji, they were living at the same time, so that means Mahabharata happened. Maybe they joined everything and made it into a new story.
देखिए लोग कुछ भी बोलते हैं, we go for preaching, you know. Yes. All sort of wild arguments people give. Yes. Then why are there so many shlokas about it? That has nothing to do with it. Yes. In Mahabharat, there is astronomical evidence of when the events happened and it gets mapped. Fine. Again आप astronomy पे जा रहे हैं, ठीक है? Okay. Anybody else? Arthashastra by Kautilya has Okay. principles. Arthashastra by Kautilya is We have to appreciate it. We really very seriously. This is good answer. But exactly, even this is not the exact answer. Arthashastra by Kautilya is basically a book which denotes how a king should rule. It has polity, war principles. But some people may even argue that Arthashastra is the original book. Mahabharata took inspiration from Arthashastra. No, Mahabharata took its references from Arthashastra took its references from That Mahabharata. may be your speculation. Right? Yes. Maybe after the war happened. Obviously, war के बारे में लिखना है लिखेगा. That has nothing to do with the question which I asked. आपको मैं वादा स्ट्रॉन्ग करूं, हिस्टोरिकल वादा कैसे कैसे आता है, कैसे आप आंसर करेंगे. Prabhuji, maybe because the temples which Pandavas made in their Vanvas, but the stone which is made of is means 5,000 or 3,000 years ago. There is no such things. Okay, last chance if anybody, then I will explain. अभी sequentially पीछे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है? Yes, anybody else? नहीं? Okay. तो ये बहुत ही interesting, one of very fascinating direct historical reference to the Mahabharata, because if we Indians we give any historical reference, like he said, Arthashastra का reference देंगे, चाणक्य का reference देंगे, and so on. अरे Indians का कुछ historical हो ही नहीं सकता है. जनरली चलता है ना माइंडसेट, भारत में क्या है, Indians का ग्रीक्स ने बोला है, है ना? क्योंकि अभी भी हम माइंड से ब्रिटिश ही हैं. तो हमारा बाप कौन है? ब्रिटिश. हमारा चाचा कौन है? ग्रीक्स. तो चाचा जी बोलेंगे तभी मानेंगे भारत में. बहुत से लोग ऐसे एकेडमिक्स में. तो चाचा जी एक रेफरेंस दे रहे हैं, डियॉन. डियॉन कौन है? डियॉन इज अ ग्रीक ट्रैवलर. ही इज कमिंग फ्रॉम ग्रीस. ठीक है? डियॉन क्राइसोस्टोम. डियॉन क्राइसोस्टोम का डेटिंग देखिए 40 से 105, मतलब आज से 2000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली वो पैदा हुआ है, और ही इज कमिंग टू इंडिया and he is giving a very interesting historical detail. This is the book of Dion Chrysostom. He says, India, ध्यान से सुनना, I हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा. The Indians possessed an Iliad of 1 lakh shlokas. हिंदी में बता रहा हूँ. The Indians, भारतीयों के पास एक Iliad था जो 1 लाख श्लोकों का था. अभी क्लियर करते हैं महाभारत में कितने श्लोक हैं. Iliad में कितने वर्सेस हैं. इलियड ओडिसी सुना है आपने? ग्रीक एपिक्स है, ग्रीक महाकाव्य, ग्रीक एपिक इलियड. इलियड में कितने वर्सेस हैं? ऑब्वियसली लेस देन 1 lakh, पर बहुत लेस है. कितना लेस है? स्पेकुलेट मत करिए, पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा. आगे बताइए. बता दो. इलियड में 16,000 श्लोक के आसपास है, 16,000 के आसपास. तो अभी डियॉन नाम का व्यक्ति, ध्यान से सुनना, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है. डियॉन नाम का व्यक्ति भारत के अंदर आ रहा है और बोल रहा है कि इंडियंस के पास एक इलियड है जो 1 लाख वर्सेस का है. मतलब पागल हो गया क्या? Is he mad? He is saying that Indians had an Iliad of 1 lakh verses. What is he trying to say? Mahabharata exists. No. इसमें आपको एक हम एक रेफरेंस पॉइंट के एक व्यक्ति को लेते हैं, who is from a village, मतलब अंदर गांव से आए हम. ये है यहाँ. अच्छी बात है. हाँ, तो मुझे योर नेम राजू प्रभु. which village you are from? Nadukura. He is coming from Nadukura village. Imagine in his village there are no Christians, Muslim, Buddhist, Jain, Sikh, कुछ भी नहीं है. They are only Hindus. And for Prabhuji, he knows that religion means Hinduism, because he has not seen any other religion. अभी social media नहीं है, imagine कर लेना, TV नहीं है, कुछ नहीं है. He knows only Hinduism. अभी for him, holy book मतलब धार्मिक ग्रंथ, religious book means Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means religious book.
he has not experienced any other religion. समझ रहे हैं? केस स्टडी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सच में है. Imagine करिए. We imagine that he is coming from a village where there is no other religion and no holy book except Hinduism and Bhagavad Gita. Now, when he is going abroad, imagine he is going to the UK. He is going to a court and he is sitting and watching a court proceeding. वहाँ पे एक व्यक्ति है थॉमस, वो बाइबल के ऊपर प्रॉमिस कर रहा है. I promise that whatever I say is true. Thomas is promising in the Bible in the UK. You know what Prabhuji says? They see he's promising on the Bhagavad Gita. Why? For Prabhuji, holy book means Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means, फिर से बोल रहा हूँ, Bhagavad Gita means holy book means Bhagavad Gita. Got the point? अभी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको देखिए, जब Dion भारत के अंदर आ रहा है, Dion is coming to India. For him, Mahakavya means Iliad. Iliad means Mahakavya. Or in other words, for Dion, epic means Iliad. Iliad means epic. So instead of calling the Mahabharata as an epic, he calls Mahabharata as an Iliad. He is not referring to the Iliad book here. He is referring to the Iliad as an epic, as a Mahakavya. So he says the Indians possess the Mahakavya of 1 lakh verses. Understood? Yes. कितने लोग ने समझा? Yes. Got the point? So Iliad कोई है नहीं. History में कोई भी Iliad नहीं. There is no Iliad which is 1 lakh verses. Nowhere you can find in Indian history, Greek history, Chinese history, किसमें भी नहीं. There is no Iliad of 1 lakh verses. There is only one epic Mahakavya which is 1 lakh verses, which is Mahabharata. So 2000-year-old reference to Mahabharata. ठीक है? Now I'll skip all this because it बहुत सारा है. Time कितना है मुझे बस? कितना है time? बहुत है. Sincerely बोलिए, मतलब honest feedback चाह रहा हूँ. 1 hour plus. Okay, एक बार पूछ लेता हूँ. Okay, चलेगा 1 hour. हरि बोल. क्या होता है कि लोगों को है ना मुगल हिस्ट्री, अंग्रेज हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री सुनते ही बोर हो जाते हैं. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. सही है. चाहिए तो एक बार फिर से हरि बोल बोलिए. ठीक है. तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैवलर्स अकाउंट्स. जो भारत के अंदर जो ट्रैवलर्स आए थे, चाइनीज, ग्रीक्स, मुस्लिम्स, वो लोगों ने भी महाभारत को सच करके माना है. ये चाइनीज ट्रैवलर है युआन चुआंग. ठीक है. युआन चुआंग अपने किताब में रेफरेंस दे रहा है कि यहीं पे महाभारत युद्ध हुआ था, यहीं पे उनके अस्थि जलाए गए, मतलब बॉडीज जलाए गए थे. अस्थि यहीं पे मिलता है, अस्थिपुरा. आपको पता है कुरुक्षेत्र में देयर इज वन प्लेस कॉल्ड एज अस्थिपुरा. कितने लोग सुना है? हमने अभी वर्ड अस्थिपुरा. अस्तिनापुर इज देखना. हाँ, दिस अस्थिपुरा. अस्थि, the bones का पाउडर. अस्थिपुरा नाम का एक जगह था जहाँ पे सबका जलाया गया था बॉडी. You know the story that why we don't find archaeological evidence in Kurukshetra? Do you know why? Everybody so खुदाई करो कुरुक्षेत्र यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है महाभारत का mythology. Because at the end of the war, Yudhishthir Maharaj wanted to do अंतिम संस्कार. So he said, जो भी बच्चे हैं, bring all these bodies and we will bring them in one place and they did अंतिम संस्कार. अस्थि का निकला था, इसलिए उस एरिया का नाम है अस्थिपुरा. अब आपको क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा जब सबका बॉडी जलाया गया है? कुछ मिल सकता है तो कहीं स्कैटर्ड वेपन्स कहीं पे होंगे तो मिल सकता है, चैरियट्स मिल सकता है. बट बोन्स कैसे मिलेंगे? ह्यूमन रिमेन्स कैसे मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. जलाया गया सब कुछ. अस्थिपुरा. तो अस्थिपुरा का रेफरेंस ही दे रहे हैं. युआन चुआंग इज गिविंग रेफरेंस ऑफ अस्थिपुरा. एंड देन बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरेंस है 2000 साल पुराना लिटरेचर है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी. ये ग्रीक डॉक्यूमेंट है, ट्रैवलर्स डॉक्यूमेंट. एक ट्रैवलर बाहर से आ रहा है, वो बता रहा है कि ये जो है द्वारका है, यहाँ पे सी नेविगेशन होता है एंड सो ऑन. द्वारका का रेफरेंस दे रहा है ग्रीक ट्रैवलर. कुछ लोग ये भी कहते हैं द्वारका जो है इट इज नॉट हिस्टोरिकल, somebody created it at a certain point of time. अरे 2000 साल पुराना ग्रीक राइटर भी द्वारका का रेफरेंस दे रहा है. राइट. स्टोमेटिस, ये और एक ग्रीक राइटर है स्टोमेटिस. वो बता रहा है कि भारतीयों के पास एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिसका नाम था ब्राह्मणास.
अच्छा सा नाम है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण अच्छे रूल्स फॉलो करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे, खाना उनका साफ सुथरा था एंड सो ऑन, और वो जीवित कोई चीज को खाते नहीं थे, ठीक है, और रीबर्थ पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। और ब्राह्मण जो है हेराक्लिस की पूजा करते थे। हरि 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 पुलिस की पूजा करते थे ब्राह्मणस। ब्राह्मणस क्यों हेराक्लिस की पूजा करेंगे? ब्राह्मण हरि को बस बात खत्म। हेराक्लिस की पूजा ब्राह्मण्स क्यों करेंगे? Because Brahmins are the ones who worship in temples. Definitely they will worship Heracles. What is Pan? Pan is another god, Vedic god. अगर उसका जाना तो मैं पान का पूरा हिस्ट्री आपको सुना। पान एक ऋग्वेदिक एक देवता है, जो पान कल्चर जो है वो अलग अलग कॉपी फॉरवर्ड हुआ है, वो अलग है। लेके जाऊंगा तो उसको 10 मिनट समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये महाभारत नाम का टेक्स्ट, इसका हिस्टोरिकल बैकिंग क्या है? अभी हम टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं। ये जो वॉर हुआ था, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है, इसको कैसे बोल सकते हैं कि वॉर सच में हुआ है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर था, सबसे बड़ा वॉर। इसमें करीब 7 अक्षौणी पांडवों के साइड, 11 अक्षौणी कौरवों के साइड, और एक महायुद्ध लड़ा गया था। और कुछ लोग सोचेंगे कि कुरुक्षेत्र में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा वॉर जहाँ पे करोड़ों लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक छोटे से कुरुक्षेत्र सिटी में हो जाएगा पूरा लड़ाई? महाभारत में रेफरेंस आता है योजन का। योजन, अर्जुन एक जगह पे लड़ाई कर रहे हैं और अभिमन्यु एक जगह पे लड़ाई कर रहे हैं। दोनों के बीच का गैप पता है कितना था? 30 किलोमीटर। योजन के साथ मैं बता रहा हूँ 3 किलोमीटर, 3 से 4 योजन तक की। मतलब इतने लंबे, तो इतने ड्यूरेशन का वास्ट एरिया में लड़ाई चल रही थी। तो आप जाएंगे कुरुक्षेत्र सिटी में, पूरा सिटी कंस्ट्रक्टेड है, आगे कोई स्पॉट यहाँ पे चलो खुदाई करो, कुछ नहीं मिल रहा है। महाभारत ऐसे नॉलेज नहीं, ये चलता है आज के एकेडमिक्स में, ठीक है। तो महाभारत ऐसा किताब है, दुनिया के वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा किताब नहीं है। इसमें ही हमारा प्यारा भगवत गीता भी है, हमारे लिए डिवोटीज के लिए, हर एक सनातन धर्म की प्रैक्टिस करने वाले सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है भगवत गीता। भगवत गीता कहाँ पे बिलोंग करता है? महाभारत में बिलोंग करता है। इसलिए महाभारत का हिस्टोरिकल एविडेंस प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि उसमें गीता कनेक्टेड है। गीता में हमारे कृष्ण का टीचिंग्स कनेक्टेड है। हमारा पूरा जो प्रीचिंग होता है सब भगवत गीता के बेस पे है। तो भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। तो महाभारत में क्या है? ज्योग्राफी है, देवी शास्त्र, चार्जर, ये एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन है। बंद हो गया। आ जाएगा। ओके, अभी हो रहा है। सो महाभारत में इतना सारा डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे आप काम करेंगे ना, पूरा जीवन आपका कम पड़ जाएगा। इतना सारा रिसर्च इसमें हो सकता है। इसमें फ्लोरा फौना है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टाइप के पक्षी, पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स, particular type के animals, they have descriptions of those animals and plants. You try to map it analytically, you will find evidences. This again is a lifetime research on this one subject. Paleobotany, paleozoology जिसको बोलते हैं. Imagine the scope of research possible in just one literature called as Mahabharat. So like this, every field has its own impact, own history, own possibility. So when you study ancient Indian literature, भारत के इतिहास को स्टडी करेंगे, लिटरेचर स्टडी करेंगे, तो प्राइमरी 2 कैटेगरी में आता है। एक है श्रुति, श्रुति और स्मृति, श्रुति और स्मृति। ये देखिए बार-बार पूछने से एनर्जी वापस आता है, ठीक है। श्रुति एंड स्मृति। श्रुति में क्या होता है? वेद, जो मेन जो संहिता मंत्र जो होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांत का उपवेद। और यहाँ पे आता है स्मृति, जिसको याद किया जाता है, स्मृति, ठीक है। तो स्मृति को भी जो स्कॉलर्स, एंटी हिंदू स्कॉलर्स जो है ना, वो जनरली अटैक किसको करते हैं? स्मृति को अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? द ओरिजिनल रिलीजन इज वेद। वेद ही सच्चा रिलीजन है।
हमें महाभारत, भागवत पुराण, ये सब हम नहीं, गीता ये सब नहीं मानेंगे, ये स्मृति है, ये बाद में लिखा गया था। यू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? इसके हिस्टोरिकल एविडेंस को प्रूव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब जगह पे यही चलता है ना, इस बाद में दिया गया था जी, ये सच, ये ओरिजिनल सनातन धर्म नहीं है। ये महाभारत, भगवत गीता डुप्लीकेट है, बाद में क्रिएट किया गया, स्मृति है ना, नाम से पता चल रहा है स्मृति है। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, तो स्मृति में आता है पुराना और आता है इतिहास। पुराना शब्द का अर्थ क्या है? नाम में है पुराना, बहुत पुराना, नहीं? पुराना इज पुराना, सिंपल, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, ज्यादा पुराना है। तो इतिहास क्या होता है? पुराना से इतिहास में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। पुराना का पर्पस है ना, इट इज नॉट एक्जैक्टली टू रिकॉर्ड हिस्ट्री, इट वाज नॉट मेंट फॉर रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। It has historical data, but its purpose was not specifically history. It had multiple purposes, cosmology and philosophy, many other purposes. But the purpose of itihasa was specifically to record what happened. Now, what does it mean by itihas? Who knows? It thus happened. It so happened. Itihasa, ऐसे हुआ था, simple. It thus happened. नाम में है ना। अब एक व्यक्ति किताब का नाम लिख रहा है कि ऐसे हुआ था, किताब का नाम पता है क्या है? ये ऐसा हुआ था, समझ रहे हैं? तो महाभारत का और एक नाम है, नाम क्या है? ये ऐसे हुआ था, इतिहास। इतिहास मतलब ये ऐसे हुआ था, ठीक है, ये ऐसे हुआ था, ये thus happened, वो है इतिहास, और उसमें है महाभारत। तो महाभारत शब्द का क्या अर्थ है? कौन बोल सकता है? What does it mean by? अभी मैं पूछूंगा एक सवाल, सब लोग हाथ उठाएंगे। What is the meaning of भगवत गीता? कितने लोग बताएंगे? The song of God. The song of God. Song of God. Song of भगवान। God भी थोड़ा इतना डिस्क्राइब नहीं करता जितना भगवान शब्द डिस्क्राइब करता है। Full of opulences, भाग्य, ठीक है? पहले भाग्य में करता है, ठीक है? तो भगवान। अभी what does it mean by महाभारत? The Great Bharata. The Great Bharata. Great Bharata, very good. एक explanation है कि बड़ा भारत, ठीक है? और क्या हो सकता है? महाभारत शब्द का अर्थ क्या है? और स्पेसिफिकली बताइए, महाभारत शब्द का क्या अर्थ है? वेरी नाइस, ग्रेट स्टोरी ऑफ द भारत डायनेस्टी, मतलब भारत वंश का जो स्टोरी है, क्योंकि कौरव पांडव किस वंश से थे? भारत वंश से थे। तो भारत वंश का महान इतिहास महाभारत, ठीक है? और क्या हो सकता है महाभारत का अर्थ? एक अर्थ है ज्योग्राफी का अर्थ है, द एंटायर भारत, दक्षिण भारत, जिसको आज बहुत फेमस यूज किया जाता है, वो जो बड़ा सा भारत खंडित होता गया है, खंडित होके आज छोटा सा देश है इंडिया। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग महाभारत। और महाभारत शब्द का जो भारत है उसका और एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये महाराज भरत से आता है, ठीक है? तो इतने सारे अंडरस्टैंडिंग्स एक शब्द महाभारत से हमें मिलता है। तो जब हम स्मृति की बात करते हैं, श्रुति की बात करते हैं, तुरंत से क्या बोलते हैं? श्रुति सच है, वेद ही सच्चा रिलीजन है, स्मृति झूठा है, बाद में लिखा गया था। आपने सुना होगा आर्गुमेंट, कितने लोग सुना है ये आर्गुमेंट? स्मृति बाद में लिखा है, सच्चा रिलीजन वेद है। एवं कुछ हिंदू अपने से पे चलाते हैं स्टोरी, हम पुराणों को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम मानेंगे वेद को। देखा है आपने जो ऑर्गेनाइजेशन से चलाते हैं? आई थिंक स्लोली आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. खुशी होती है, ठीक है? इंटरैक्ट करते हैं ना, मुझे भी एनर्जी आता है, क्योंकि देखिए अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, टॉक दे रहा हूँ, तो आप जब रिएक्ट करते हैं ना, मुझे भी चलो यार कुछ तो रिएक्शन आ रहा है। तो मुझे क्या लगता है, आप यहाँ पे फिजिकली हैं बट अंदर कोई चल रहा है, मेटावर्स में कुछ चल रहा है। तो इसलिए प्लीज रिएक्ट करिए। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हरी बोल मत बोलिए, एकदम सर हिला दीजिए। मुझे क्या लगता है, ऐसा लगता है कि शौक हो किस तरह है, डांस हो रहा है, थोड़ा रिएक्ट करिए, ठीक है? तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज है, हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं मानेंगे।
पर अगर श्रुति में स्मृति का प्रूफ है तो श्रुति में मैं कंप्लीट करता हूं फिर आप पूछना। अगर श्रुति में स्मृति का एविडेंस है तो जरूर मानेंगे। श्रुति में डायरेक्ट रेफरेंस है। अश्वलायन गृह्य सूत्र जो है, अभी गृह्य सूत्र अभी आपको इसको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। अभी देखिए यहाँ पे देखिए जो वेदांत है, वेदांत में कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, ठीक है। अभी रिचुअल सूत्र है वो कभी कभी वेदों का श्रुति का भी पार्ट माना जाता है, कभी कभी स्मृति का भी पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वर्णन डायरेक्ट गृह्य सूत्र जो है वो एक गृहस्थ अपने लाइफ में क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो लिखा रहता है गृह्य सूत्र। अभी अश्वलायन गृह्य सूत्र जो है बहुत ही पुराना है, इज रिलेटेड टू द ऋग्वेद से कनेक्टेड है। अश्वलायन गृह्य सूत्र तो अश्वलायन मुनि वो किताब को लिख रहे हैं। तो अश्वलायन गृह्य सूत्र में लिखा है कि एक गृहस्थ जो है उसको ये किताबें पढ़ना चाहिए। इसमें एक किताब है इसका नाम है भारत और दूसरा किताब है इसका नाम है महाभारत। अभी आप बताइए कि दो किताब थे क्या पहले? दो किताब थे क्या? कितने लोगों ने सुना है किताब भारत नाम का किताब था पहले? कितने लोगों को पता है? महाभारत आदि पर्व तो जो पहला पर्व है उसका फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे ना, वहां पे आता है कि पहले व्यासदेव जी ने दिया था तो उस किताब का नाम था जय संहिता। फिर उसको उनके डिसाइपल्स ने एक्सपैंड किया, वो बन गया भारत। उनके डिसाइपल्स ने उसको एक्सपैंड किया, बन गया महाभारत। तो दो लेवल में तो उस लोग बोलेंगे हाँ तो ये व्यासदेव ने नहीं किया है ये महाभारत, ऐसा नहीं है। व्यासदेव जी के गाइडेंस में ही एक्सपैंड हुआ है। ऐसा नहीं कि व्यासदेव लिखे और 1000-2000 साल के बाद किसी ने इमेजिन करके उसको महाभारत बनाया, ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं बड़े-बड़े ऑथर्स क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और बोलते हैं अपने स्टूडेंट को बोलते हैं इसको एक्सपैंड करके ठीक से लिखो। यही हुआ जय सूत्र बना भारत, भारत महाभारत। तो जय किताब का वर्णन नहीं है पर भारत महाभारत किताब का वर्णन कहां पे है? अश्वलायन गृह्य सूत्र जो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए काव्य का संहिता, ध्यान से सुनना बच्चों, बात नहीं करना। काव्य का संहिता जो यजुर्वेद का जो पार्ट है काव्य का संहिता, काव्य का संहिता में एक राजा का वर्णन है जिसका नाम है धृतराष्ट्र। अभी देखिए धृतराष्ट्र, ये काव्य का संहिता मतलब यजुर्वेद के जो यजुर्वेद के जो धृतराष्ट्र है, ध्यान सुनिए मैं साइलेंस से बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यजुर्वेद के जो धृतराष्ट्र, see the Dhritarashtra of Yajurveda is here and this is the Dhritarashtra of Mahabharata. Are they similar or different? We will see now. See, Yajurveda describes that Dhritarashtra is the son of Vichitravirya, तो विचित्रवीर्य का बेटा है। यजुर्वेद में लिखा है, महाभारत की बात नहीं कर रहा हूं, यजुर्वेद describes। Yajurveda says he is the son of Vichitravirya. Yajurveda also says he is the king of Kuru and Panchala। धृतराष्ट्र कुरु वंश के राजा थे ना, कुरु राज्य के राजा थे। महाभारत में क्या बोलता है? ही इज अ कुरु राजा, करेक्ट? पर पांचाल को कैसे समझे? यजुर्वेद में लिखा है ही वाज आल्सो द किंग ऑफ द पांचालस। पांचाल पास में तो था, बार-बार पांचालस वाज कमिंग अंडर कुरुस। ये भी हमने देखा द्रोणाचार्य और पांचाल का फाइट चल रहा था, द्रोणाचार्य बोलते हैं अभी लाते हैं इनको कुरुस के नीचे। ये बार-बार हुआ है। तो जब वेद का पीरियड है उसमें लिखा है कि कुरु पांचाल के राजा है, ये कुरु के राजा पांचाल बीच में कंट्रोल में आते थे, महाभारत का वर्णन है। देन एक और रेफरेंस है यजुर्वेद में कि धृतराष्ट्र इज द भरतवंशी। धृतराष्ट्र जो है भरतवंशी है। यहाँ पे महाभारत के धृतराष्ट्र भरतवंशी है, बिल्कुल है। कई श्लोकों में हमारे जो संजय है, संजय धृतराष्ट्र को लेकर बोलते हैं हे भारत, मतलब भरतवंशी। तो भरतवंशी रेफरेंस यहाँ पे भी है, भरतवंशी रेफरेंस वहां पे भी है। अभी आप बताइए व्यक्ति और कौन है भाई, और हिस्ट्री में बताइए और क्या ऐसा व्यक्ति, इतने सारे सिमिलैरिटीज हैं। यजुर्वेद के धृतराष्ट्र और महाभारत के धृतराष्ट्र डिफरेंट कैसे हो गए? तो महाभारत में कैरेक्टर धृतराष्ट्र का वर्णन है, वेदों में है, ठीक है। और देवपी शंतनु ऋग्वेद में बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल है, बहुत ही फैसिनेटिंग। मतलब आप किताब पढ़ेंगे तो पूरा रिलेट करेंगे। देखिए मैं गला फाड़ के कितना भी समझाऊं, when you read those references and make understand in sequence, आप फैसिनेट हो जाएंगे कि कैसे ये कनेक्ट होता है। देवपी शंतनु और तीसरा भाई कौन था? बल्लिका।
बालिका, वेरी नाइस। देवकी शत्रु बालिका, बालिका कहाँ जाके सेटल होता है? उस देवी का नाम क्या बन गया? बालिका। ठीक है, बालिका बन गया बालिका। तो देवकी शत्रु ऋग्वेद का वर्णन है और ये कॉन्टेम्पररी थे, दोनों कुरुवंश के थे। सेम देवकी शत्रु महाभारत में पाए जाते हैं। ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण का नाम डायरेक्टली वेदों में है, चांदों के उपनिषद ऋग्वेद में है। चांदों के उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का डायरेक्ट रेफरेंस है। अभी हिस्ट्री में एक और व्यक्ति बताइए जिसका नाम देवकी पुत्र कृष्ण वासुदेव था। कौन था? देवकी पुत्र था। पौंड्र का भी इंटरेस्टिंग अपडेट, पुरातत्व का फैसिनेटिंग डिटेल दिखाने वाला हूं। पौंड्र को भगवान ने कैसे मारा उसका एक डिटेल दिखाऊंगा, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है, ये देखिए देवकी पुत्र कृष्ण एक ही है हमारे वासुदेव कृष्ण, वही है देवकी पुत्र कृष्ण। ठीक है, तो इसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर जो बौद्ध थे, जय भीम, यहाँ पे आंध्रा में बहुत फेमस है, तेलंगाना में बहुत फेमस है, जय भीम और जय भीम, भीम ही है, जय भीम चल रहा है। तो जय भीम वाले भी जो सच्चे भीम, जो सच्चे बुद्धिस्ट हैं, they have to accept that their literature accepts महाभारत। बुद्धिस्ट लिटरेचर में महाभारत के बहुत सारे वर्णन हैं, 2400 साल पुराने, 2400 year old बुद्धिस्ट लिटरेचर refer to महाभारत, refer to कृष्णा। ठीक है, this is the oldest Jagannath Baldev Subhadra in the world, oldest Jagannath Baldev Subhadra। Here we have this चक्र है, चक्र के साथ खड़े हैं बीच में, इस साइड में हाथ में क्या है? हल। आप इतना फोटो लेके टेंशन मत लीजिए, बुक ले लीजिए, सब फोटो उसी में है। 5 कॉपी 10 कॉपी कितना चाहिए ले लेना, खुशी भी दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे हल है और बीच में चक्र है और हाथ में अम्ब्रेला पकड़ के शी इज स्टैंडिंग, जिनका एक नाम कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि एक नाम सा है, बट एक्चुअली इट इज मोर सिमिलर टू सुबह। 2400 साल पुराने सुबह के अंदर मिले हैं। टिकला मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है टिकला, और ये सबसे पुराने जगन्नाथ बलदेव एंड एक नाम सा या सुभद्रा का 2200 साल पुराने देवगढ़ उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और कई पुराणों में रेफरेंस पाया जाता है, तो कोई भी पुराण ले लीजिए, महाभारत कृष्ण के वर्णन देख सकते हैं। तमिल लिटरेचर, बहुत सारे पुराने तमिल मैन्युस्क्रिप्ट में रेफरेंस पाए जाते हैं महाभारत के, कृष्ण के। और सर्जरी बुक्स, सुश्रुत में जो लिखा है सर्जरी किताब, उसमें रेफरेंस दिया गया बलराम जी का। पाणिनि जो ग्रामर बुक लिख रहे हैं, संस्कृत ग्रामर, इन दैट वी फाइंड रेफरेंस टू कृष्णा, महाभारत, अर्जुन, राइट। सो आज आप जो बैठे ना इस कंट्री में, इसका नाम एक्चुअली इंडिया नहीं होता। Any other names you suggest for this country? Any other names? Bharatavarsha. Very good. Any other names? Krishna. Any other names for this country? Aryavart. Any other names? Yes. नहीं, वंश की बात नहीं कर रहा हूँ। Speaking of the country name, how can we? That is one kingdom within the Bharat. Hindustan. बिल्कुल भी नहीं। Yes, any other names? So this country cannot be named India. Why? Because as I told you in the earlier class, it has been derived in multiple sequences from a Sanskrit word. It has no essential meaning on its own. Whereas when you take the word Bharata, it has a geographical meaning. It has a genealogical option. Genealogical meaning. It has a political significance, not parapolitical. Mahabharata politics, political significance, right? Multiple angles if you see, and Bharata Raja was there. So this country, ये राज्य का नाम, इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए। इसके लिए एक इंस्क्रिप्शन भी पाया जाता है। इस इंस्क्रिप्शन में पता है क्या लिखा है? आ सेतु हिमाचलम भारतम। ये सेतु क्या है? सेतु, राम सेतु, आ सेतु हिमाचलम। हिमाचलम क्या होता है? हिमालयस।
मतलब आ से तू हिमाचलम, ये है भारत। अभी कितना लैंड हमें वी हैव लॉस्ट, राइट। अब अलर्ट नहीं रहेगा ना और भी चला जाएगा। और ये हंसने की बात नहीं है, कल ऐसे भी हो सकता है। अभी आपको पता है चैतन्य महाप्रभु के कितने लीला स्टडीज आज आप जान नहीं पाएंगे। बांग्लादेश नाम की कंट्री हो गया, so you cannot visit there. Tomorrow that can happen to any place in India which is related to Krishna. Already we lost Takshashila, which is Dharmajya's history. We lost. It can anytime happen. Why it happens? ये क्यों हो रहा है? Because हम अपने हिस्ट्री को समझ नहीं रहे हैं. We don't understand the glorious culture which we belong to. ठीक है? So महाभारत वॉर जो है ना, वास्ट था, वास्ट। उसका शायद मैप भी रखा हूं मैं। हाँ, ये देखिए, इतने सारे एरियाज का डिस्क्रिप्शन महाभारत में है। इतने सारे एरियाज, अब टेंशन मत लेना, बुक में है, फोटो सब है, मिल जाएगा फोटोज, ठीक है। तो ये सब एरियाज का नाम महाभारत में पाया जाता है। और बहुत सारे कंट्रीज का नाम आप देखेंगे ना, उसका हिस्ट्री ट्रेस में महाभारत। यू नो हाउ द नेम ईरान कम्स? ईरान कम्स फ्रॉम संस्कृत। हरियाणाम रजित नाम का एक शब्द है फारसी लैंग्वेज में। हरियाणाम रजित मतलब आर्यंस यहाँ पे सेटल हुए हैं। हरियाणाम रजित, हरियाणाम रजित, ईरान वहां से आता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पता है क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय पाकिस्तान? इट मींस द लैंड ऑफ द प्योर, लैंड ऑफ द शुद्ध। मतलब जो भी छूट गए यहाँ पे अशुद्ध है। But देखिए इतना इंटरेस्टिंग है, they have written Pakistan, they said we are pure, we take only pure things. But then why do you take Sanskrit language? स्थान से संस्कृत बोलते हैं। Pakistan, Afghanistan, right? And so on. So now coming to the most last portion of our seminar, which is Dwarka. क्या मिला है पुरातत्व में? What we have found in archaeology. So ये आपको मैं मैप दिखा देता हूँ। ये जो है द्वारका है, ठीक है। ये पूरा गुजरात का वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात। हियर यू कैन सी दिस एरिया, दिस शेडेड पोर्शन व्हिच यू सी हियर। यहाँ पे पानी के अंदर एक्सकैवेट हुआ है, so they have gone inside water and that small shaded area only they have researched. But in Bhagavatam and Mahabharat we find that Krishna's Dwarka was several yojanas. Several yojanas, तो बहुत ही बड़ा था। ये तो पता है कितना है? How much this is? Just 750 square meters. एक स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है, 750.75 स्क्वायर किलोमीटर की एक्सकैवेट हुआ है पानी के अंदर। और उसमें इतने सारे उनको चीजें मिले, people were like डिस्कवरी चैनल का ये बना, रिसर्चर को अवार्ड्स मिले, इतना डॉक्यूमेंट्रीज बना। इतने छोटे से एरिया में इतना सारा रिसर्च मिला। और ये एरिया कहाँ पे है? द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल पास है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है बेट द्वारका, बेट द्वारका कितने लोग द्वारका गए हैं? राइट, द्वारका गए होंगे, द्वारकाधीश मंदिर को देखा, भगवान का दर्शन लिया। कभी सोचा पानी के अंदर कहाँ पे क्या चीज होगा? तो ऐसा तो कभी नाव पे गए होंगे द्वारका टू बेट द्वारका, कभी सोचा होगा यहाँ पे होगी कृष्ण के पैलेस के ऊपर में नाव चल रहा है? कभी ऐसा सोचा है? कभी एनिमेशन करके देखा है? तो ये जो है पूरा द्वारका जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ना, बेट द्वारका, इतना ही रिसर्च हुआ है। बाकी पूरा सिटी अभी भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो जब उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पाया ये द्वारकाधीश मंदिर के पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल स्पॉट्स है यहाँ पे, उन्होंने पाया। तो इसको अगर हम मैपिंग करेंगे, ये देखिए, ये उसके जो फोटोज हैं, पानी के अंदर जो फोटोज हैं, एंशिएंट सिटी का फोटो है, वॉल्स, स्ट्रक्चर्स, पैलेसेस के रिमेन्स, राइट। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एक एविडेंस है, ये देखिए, अभी जो नीचे मिला है ना, उसके बिल्डिंग्स को अगर मैप करेंगे वो ऐसे दिखता है। देख पा रहे हैं आप लोग? It's like a building which is submerged and broken and underwater. What's the point? Yes. थोड़ा सरेगा दीजिए। Yes. क्वेश्चन दीजिए बेटो। Yes. Right? तो पानी के अंदर मिला है ऐसे, अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स मिला है। तो इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग है ये इंस्क्रिप्शन। तो पानी का क्या लिखा है? ये बॉडी लिखा है। एक जार मिला है ऐसे, जार,
मतलब ये ऑफ कोर्स मेटालिक है, एक मट्टी का या टेराकोटा का जार बना है, उसमें उस जार में क्या लिखा है, उसमें लिखा है महाकच्छसपः। महाकच्छसपः, महा मतलब क्या है, ग्रेट, अपह संस्कृत लैंग्वेज, अपह वाटर, yes, भूमेरापो नलो वायु, right? Apaha means water. So Maha is great, Apaha is water. What does it mean by Kacha? Kacha can also mean sea, Kacha can also mean a turtle, Kacha can also mean a land surrounded by sea. Okay? Maha Kacha, the land surrounding the sea, or Maha sea, मतलब great sea. Sa Apaha, पानी के। तो बेसिकली ये क्या है, स्कॉलर्स ने इसको डिकोड किया है कि इसमें क्या इसका अर्थ है कि हे महासमुद्र देवता, इतना लिखा है। इसको अगर हम और थोड़ा एक्सपैंड करें ना, इसका ये अर्थ होता है, मेरे बुक में पूरा इसका मैं थीसिस से दिया है, देखना मैं सिंपल में बता दूं। महाकच्छसपः का क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हे समुद्र देवता हमारी रक्षा करें। भाई समुद्र देवता कौन है? सी गॉड कौन है? वरुण देव, ठीक है। वरुण देव को प्रार्थना करने की जरूरत क्या थी? बोलिए। वरुण देव को प्रार्थना करने की एक इंस्ट्रक्शन मिला है पानी के अंदर, जरूरत क्या है? इसे क्या समझ में आता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि द्वारका पानी के अंदर है, ये समुद्र देवता हमारी रक्षा करें। गुस्सा मत होना, समुद्र के बीच में खड़े हैं, we are standing in the middle of the ocean. If you become angry fish, please हमारी रक्षा करें। ये एक आंसर है। दूसरा आंसर क्या है? हे समुद्र देवता हमारी रक्षा करें। क्यों? Because you are on the sea and you will keep doing travels to outside countries, outside regions. So when you start, you pray to sea God, please don't be angry, please don't be upset. Allow me to peacefully pass. हे समुद्र देवता हमारी रक्षा करें। Right? तो समुद्र देवता का जो मंदिर है वेस्टर्न डायरेक्शन में है, द्वारका वेस्ट में है, पश्चिम में। और वेदों में भी यही बताया गया है, महाभारत में बताया गया है कि जो वरुण देव जी का जो डायरेक्शन है ना वो वेस्ट है। तो वेस्टर्न डायरेक्शन में वरुण देव का मंदिर पानी के अंदर, उसका इंस्क्रिप्शन मिला है। इससे क्या समझ में आ रहा है? तो महाभारत में जो था, एक महाभारत में इंस्क्रिप्शन पाया जाता है कि वरुण देव का पोजीशन बहुत ही respectful था द्वारका में। They used to pray to Varun Dev, they used to consider him as the god of the west, and they used to start their journeys to the sea. उनका इंस्क्रिप्शन पाएंगे तो मिला। और इंस्क्रिप्शन का डेटिंग सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ये इंस्क्रिप्शन 4000 साल पुराना है। ये भी मच ओल्डर, बट जितना उनका डेटिंग हुआ था, it shows it's 4000 years, right? अभी और एक इंटरेस्टिंग ये है सील्स। द्वारका में सील्स वर यूज्ड एज आईडी कार्ड्स। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये महाभारत में है। महाभारत says that you can see here, ये श्लोक है महाभारत का, let a single door be established for the entry and exit to the city. Anyone who wishes to leave the city may carry a seal, mudra, and go near the gate. Also they had specific metallurgy and terracotta molding techniques. इस स्पेसिफिक मोल्ड रहेगा तभी अंदर आओगे। जैसे हम एन्क्रिप्शन करते हैं ना, आईडी कार्ड में स्पेसिफिक एन्क्रिप्शन कर दिया, तो वो लोग वो आईडी कार्ड जो प्रॉपर एन्क्रिप्टेड आईडी कार्ड लेके जाएगा वो अंदर जा पाएगा। विदाउट प्रॉपर एन्क्रिप्टेड आईडी कार्ड यू कैन नॉट गो इनसाइड। So this is like an encrypted ID card they used to follow. This is mentioned in Mahabharata. So have they found this in archaeology? Yes. G.P. Singh नाम के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक चीज लिखते हैं कि द्वारका was a hotbed of seal manufacturing which were used for specific identification purposes. वो seals का एग्जांपल देते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां तक एक्सटेंड था, वहां पे there were seals which were specifically used only for the purpose of identification. They had no economical value. Seals का economical value कभी-कभी होता है, they were used as currency and so on. But ये जो seals द्वारका में मिले हैं had absolutely no economical value.
They had a unique carving in a sense to establish that they were used for the purpose of identification. महाभारत क्या बोल रहा है? Seeds for identification. समझ में आ रहा है? Yes. 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 तो इसलिए भारत की हिस्ट्री को झूठ बोलना, महाभारत झूठ बोलना, ये सब है ना बहुत ही एक कॉमन चीज है आजकल. Without speaking on data, without speaking on evidences. ग्रीक हिस्ट्री में एक शहर है जिसका नाम है ट्रॉय. There is a city called Troy. कितने लोगों ने सुना है ट्रॉय नाम का शहर? Wow, surprised this is the highest audience again. Troy is a city which is mentioned in Greek literature. And the city of Troy was destroyed by the invaders. And specifically they used a Trojan horse. Trojan horse is उसके नाम पे वायरस भी बना था. कितने लोगों ने वायरस एक्सपीरियंस किया है? इस वायरस से मार खाया है. Trojan horse वायरस एक टाइम में बहुत फेमस था. It is based on the city of Troy. तो ट्रोजन हॉर्स ये ट्रॉय ये सब मिथोलॉजी बोला गया था. अब कोई बोलता था ये ग्रीक रिलीजन सब बकवास है, ग्रीक लिटरेचर बकवास है, ट्रॉय नाम का शहर था ही नहीं, ट्रॉय इज मिथोलॉजी, ये ट्रोजन वॉर हुआ नहीं था एंड सो ऑन. बट आर्कियोलॉजी में ट्रॉय नाम का शहर मिला. एक सेंचुरी पहले ट्रॉय नाम का शहर आर्कियोलॉजी में मिला है. सब लोग भी डिफाइन करना शुरू किए. नो नो नो, ट्रॉय इज हिस्टोरिकल, ट्रॉय इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री. भी डिफाइन किया. ऐसे ही जब तक आप पूरा रिसर्च नहीं किया है, आपने पूरे भारत को एक्सकवेट नहीं किया है, पूरे महाभारत से इसको रिसर्च करके एक्सकवेट नहीं किया है, तो महाभारत मिथोलॉजी कैसे हुआ भाई? आपने काम भी तो नहीं किया है. आपको वो डेटा भी बताऊंगा आपके स्लाइड में कितना अभी तक भारत एक्सकवेट नहीं हुआ है. ठीक है. अब ये जो है बहुत ही फैसिनेटिंग है. ये है सनोली चैरियट्स. कितने लोगों ने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री द चैरियट्स ऑफ सनोली? 1 2 सरप्राइज. इसके लिए हाथ कम है. राइट. चैरियट्स ऑफ सनोली क्या है? बहुत ही अमेजिंग है. हमें बताया जाता है एकेडमिक्स में ये जो आर्य हैं, आर्यंस, ये भारत के मूल निवासी नहीं है. कितने लोगों ने ये वर्ड में सुना है? भारत के मूल निवासी नहीं. आप काले हो तो आप भारत के मूल निवासी हो, गोरे रहोगे तो आप आर्य हो और भारत से हो. सिंपल है. और आपका रिलीजन जो है वो है सनातन धर्म. अगर आप काले होंगे तो आपका रिलीजन है वो क्लियर नहीं है. कुछ बोलते हैं नेचर वर्शिप करते हैं, कुछ बोलते हैं ट्राइबल रिलीजन था. देखिए तो मूल निवासी जो है, मूल निवासी का रिलीजन सनातन धर्म नहीं था और वो काले थे और छोटे हाइट के थे. उनका नाक फ्लैट था. और आर्य जो थे लंबे थे, गोरे थे, नाक उनका सीधा था. उनको मत देखना गुस्से में आप. ठीक है. तो आर्य जो है मतलब आर्य स्ट्रांग भी थे. बस देखने में इतना कोई मस्कुलर तो नहीं था. तो आर्यस में बॉडी बिल्डर्स में बहुत स्ट्रांग दिखते थे. ये सब थियरी चला रहे थे कि आर्यन जो है गोरे होंगे, बड़े स्ट्रांग बॉडी के होंगे और उनके नाक सीधा होगा, उनके बाल स्ट्रेट हेयर होंगे और द्रविडियंस या जो मूल निवासी हैं वो हाइट के छोटे होंगे, काले होंगे, नाक दबा हुआ होगा, बाल कर्ली होगा. क्या क्या थियरी फैलाया गया था. और उसके लिए क्या बोला गया था कि आर्य जो है वो रथ में आए थे. रथ में घोड़े ला रहे हैं, आर्य अंदर आ रहे हैं, रथ ला रहे हैं और घोड़े ला रहे हैं. उसके पहले भारत में रथ और घोड़े थे ही नहीं. ये चलाया जा रहा था. हमारे एकेडमिक्स में ये चल रहा था 200-300 साल से. मैक्स मुलर जो था उसने शुरू किया है चीज. क्या बोले थे? हिंदुइज्म, सनातन धर्म, वेद, आर्य ये सब बाहर से आए. कब आए थे? 3500 साल पहले आर्य आए थे. उसके पहले यहाँ पे सनातन धर्म नाम का चीज ही नहीं था. और 3500 साल पहले ही ये रथ लेके आए थे, घोड़े में आए थे. उसके पहले भारत में रथ और घोड़े मिलते नहीं है. ये चला रहे थे एकेडमिक्स में. भारत में 3500 साल के पहले रथ और घोड़े मिल ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है. ये चला रहे थे थियरी. फिर अभी उनके मुंह पे जोर से तमाशा लगा. क्या हुआ? सनोली चैरियट्स मिल गए. ये सनोली चैरियट्स का डेटिंग 4000 साल पुराना. तो भारत के अंदर मैंने इसमें नहीं करते क्या करते हैं, मैंने नहीं किया. मैं करूंगा फ्यूचर में आपके ब्लेसिंग से. ठीक है, ये मैंने नहीं किया. बट कितना अमेजिंग है. देखिए भारत में 4000 साल. या इन इंडिया वी फाइंड chariots which are 4000 years old. What they teach us in academics, Aryans came into India 3500 years old. They only brought chariots, they only brought horses. Before that India had no horses and no chariots. Then how do you find 4000-year-old chariots? How do you find 4000-year-old chariots? If Aryans only brought chariots 3500 years ago, before that there was no chariots. This is what they teach us in academics.
How they are finding 4,000-year-old chariots? Chariots, horse bones, warriors, warrior bodies, helmets, right? And उनका जो अंतिम संस्कार, the final rites हुआ है, वो भी वेदों के हिसाब से फॉलो करके हुआ है. इसका भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है. ठीक है, 4,000 years old. Weapons मिले हैं. So the point is, पहले एक quickly ये slide दिखा देता हूँ. पता है भारत में how much India is not excavated? देख लीजिए. The American archaeologists का कहना है. American archaeologists are saying that 90% of Indian heritage lies buried. 90% of India is not excavated, and we all are responsible for it. Why? We build houses on top of it. Simple. If you want to find any archaeological spot, अगर पुरातत्व का spot देखना ना, simple है. नदी किनारे चाहिए. Highest possibility वहीं पे होता है. अब जो भी देखिए, अयोध्या में देखिए, कौन सा नदी है? वृंदावन, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के पास में कौन सा नदी था? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. किसी लोगों को पता है? Which river was flowing in Kurukshetra? Clue: Balramji's pilgrimage. Balramji's pilgrimage. Another clue: during the Mahabharata war, Balramji's pilgrimage along the banks of that river. Balramji did pilgrimage. Somebody is muttering the names of the river. Saraswati. There was a river called as Saraswati which was flowing in Kurukshetra. So there we find civilization in Kurukshetra. So civilization is always found on the banks of the river. Do we have any river in Hyderabad? This is also an archaeological spot. You are all culprits. You are sitting on top of ancient civilization. You means I'm saying all the Hyderabad buses. Okay? So we are sitting on top of ancient cities, ancient civilizations. और हम कंप्लेन करते हैं महाभारत झूठा है, एविडेंस नहीं है. 90% of India is still not excavated. Can you understand? Can you imagine? Krishna's archaeological spots still underground or underwater. वृंदावन में लोही बाजार जो है, आपने देखा लोही बाजार? कितने लोग हैं लोही बाजार? Have you seen लोही बाजार? मंदिर तो याद होगा आपको, लोही बाजार बाजार याद होगा, बट आपने देखा है लोही बाजार को मैप में देखा है? कितना फैसिनेटिंग. आपको एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिटेल बताने वाला हूं. लोही बाजार का आप एरिया जो देखेंगे, लोही बाजार में तो गोपीनाथ बाजार, वो तो बाजार एरिया जहां पे शेख गोस्वामी का मंदिर है. If you see, Yamuna river comes like this, and then it turns like this and take a U shape, and then again goes straight to Mathura. Have you all seen? Who has seen it maps? अभी देखिए ना, हो सके तो. Yamuna river comes like this straight, and then turns like this, makes a U, and then comes down. And archaeological जो spots जो है वृंदावन में, जो archaeological spots है, वो पूरे लोही बाजार एरिया में मिले हैं. लोही बाजार एरिया में जब archaeological excavation हुआ, 4000 साल पुराने potteries लोही बाजार के नीचे मिले. 4000 साल पुराने, 4000 years old लोही बाजार के नीचे मिले. लोही बाजार में होगा excavation कुछ करने देंगे? नहीं, नहीं वाला. क्यों? हम बैठे हैं उसके ऊपर. और ये शेप भी इंपॉर्टेंट है. ऐसे सीधा आके ऐसे कर्व होके सीधा क्यों हो रहा है? और भगवान ने उस साइड को क्यों सेलेक्ट किया रहने के लिए या लीला करने के लिए? पता है आपको? बिकॉज नदी ऐसे आके ऐसे कर्व होके ऐसे हो रही है, तो इसके अंदर अगर मैं रह रहा हूँ तो मेरे को तीनों साइड पानी मिलेगा. और मेरा मेन एक्टिविटी क्या है? काउस के लिए पानी का इजी एक्सेस बहुत जरूरी है. और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि तीनों साइड से पानी होने के कारण कम्स के जो अटैकर्स है उससे भी थोड़ा शांति मिलेगा. तो आप देखिए हिस्टोरिकली एंड आर्कियोलॉजिकली देखिए भगवान ने ऐसे एक स्पॉट को क्यों सेलेक्ट किया, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं. समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि हम उसके ऊपर बैठे हैं, तो हम में इंडियंस वी आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इट. And then we complain, no archaeology, no evidence. अरे आप हटो, मिलेगा. लोही बाजार में बोलिए, please vacate this place
राइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज, अभी देखिए नेचर भी अपना कमी नहीं छोड़ता है। टर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो पूरा टर्की डेवास्टेट हो गया। ये 2100 साल पुराना एक 2200 एक्चुअली 2200 साल पुराना एक अमेजिंग पैलेस है कंस्ट्रक्टेड बाय द हिटाइट्स। तो हिटाइट्स जो पहले बोला ना इंद्र मित्र वरुणा की पूजा कर रहे हैं, मतलब उनको साक्षी मान रहे हैं, वो लोग ने ये बनाया पैलेस। ये पैलेस बिफोर अर्थक्वेक का क्या हाल है, देखिए सी द कंडीशन बिफोर अर्थक्वेक एंड सी द कंडीशन आफ्टर द अर्थक्वेक। सो नेचर आल्सो अपना कमी नहीं छोड़ता है। There are volcanoes, there are earthquakes, there are rivers overflowing, flooding, invaders, nothing remains. तो भगवान ने क्या किया, कृष्णा डिसाइडेड ओके आप लोग you will keep destroying ना, I will keep it under water, क्या करोगे? I will keep it under water, what will you do? I will keep it safe inside the water. Dwarka is still under water, not even 10% of Dwarka is excavated. Anybody wants to become an archaeologist, please go ahead, do something. Right? So, with this last slide, I think, oh my God, there's a lot more, but I will finish with this because I think और history सिखाएंगे ना, फिर आप लोग history नाम सुनते ही भाग जाएंगे, joking में। तो ये जो है, ये देखिए एक साइट है, आपको समझा रहा हूँ कितना ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कितना हिस्ट्री को डैमेज किया है। ये देखिए ये एक साइट है यूरोप में, इसका नाम है कॉपरगेट सिविलाइजेशन, कॉपरगेट सिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट सिविलाइजेशन थी रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला है मॉडर्न का लेयर, देखिए यहाँ पे दिस इज मॉडर्न लेयर एंड बिलो इट इज द पोस्ट मॉडर्न लेयर व्हिच इज अराउंड 500 years old. This is the medieval layer which is around 800 years old. This is the Norman layer around 1000 years, Viking 3 1100, Viking 2 again 1100, Viking 1 this 1200, Anglian 1600, and last but least अंदर वाला layer है, it is Roman civilization का layer है which is around 2000 years old. So did you get the point? मतलब पहले सबसे पहले तो रोमन था, so the city will be destroyed or the buildings will be broken. तो क्या करेंगे उसी जगह पे, क्या करेंगे वो साफ तो नहीं करेंगे, वो जो है रबिश जो बड़ा है उसी के ऊपर अगला बिल्डिंग बनाएंगे, they will construct on top of it. तो अगला सिविलाइजेशन उसके ऊपर बांधेगा, फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर बांधेगा, then on top of it, on top of it, on top of it, on top of it. ये तो होता है। Got the point? तो ऐसे ही हमारा हिस्ट्री दबा हुआ है हमारे पैरों के नीचे, हम उसके ऊपर बैठे हैं, घर बना के बैठे हैं, 4 BHK फ्लैट बना के बैठे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं। We are all as Indians, we are responsible for this, ठीक है। सो ये सब जब क्लियर होगा, आर्कियोलॉजिकल साइट आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट इसको फंडिंग करेगा, पब्लिक इसको प्रोसीजर्स सिखाएंगे, हमारा पूरे भारत का इतिहास निकल सकता है। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होगा कि 10 साल 20 साल निकलेगा, बहुत टाइम लगेगा, बट निकलेगा जब तक हमारे अंदर इसका अवेयरनेस नहीं आएगा, सीरियसनेस नहीं आएगा, ठीक है। आपको और भी स्लाइड्स हैं, मैं क्विकली कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें महाभारत का ईयर, एग्जैक्ट ईयर बताया गया है, और महाभारत का कल्चरल इंपैक्ट, आर्ट, डांस, म्यूजिक में आज तक कंटिन्यू होता आ रहा है। कंबोडिया में महाभारत के कार्विंग्स पाए जाते हैं भीष्म के। ये है इंडोनेशिया में जो पपेट शो होता है, वहां पे महाभारत के ये चाइना के केव कारपेट्स हैं, वॉल कारपेट्स, जहाँ पे कृष्ण के बाल लीला, यशोदा मैया कृष्ण के जो पास थे चाइना में पाए गए। उसी चाइना में स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट, एक मैन्युस्क्रिप्ट है महाभारत का, मैन्युस्क्रिप्ट 2000 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट चाइना में पाया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस के साथ आज ये किताब आपके सामने अवेलेबल है, महाभारत में बहुत। तो अभी हम सोचते हैं कि इस किताब को लेने की क्या जरूरत है। जैसे एक मंत्री ने पहले बताया था, उनके फैमिली मेंबर एक जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम पागल हो गए हैं, भगवत गीता पढ़ के चैंटिंग करके हमारा भेजा खराब हो गया है। तो क्या है काल्पनिक चीज को पकड़ के पूरा दिन बैठ के हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हो, झूठी कहानी। तो विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास इतिहास, विश्वास कई तरह से आता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रास्ता है इतिहास।
इतिहास को सही तरह से समझने से विश्वास करें कि हाँ सच में चीज हुआ था, ये सच में थे व्यक्ति, झूठे नहीं है, इसका वास्तविक प्रमाण है, मैं कोई झूठी कहानी फॉलो नहीं करता हूँ, ये सच्चा चीज है। आपको पता है हमारे कितने सारे हिंदू फैमिलीज में कितने बच्चे एथिस्ट बन रहे हैं, कितने वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, क्यों? उनको विश्वास नहीं है, ये तो मिथोलॉजी है, काल्पनिक है, मैं क्यों इसको मानूं? आपको पता है डिवोटीज फैमिली में ज्यादा बच्चे जो है वो नॉन डिवोटीज बन जाते हैं, क्यों? हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं, और कन्विंस नहीं करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उनको फेथ नहीं है कि सच में हुआ था नहीं हुआ था। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में स्कूल में पढ़ के आए हैं, स्कूल में क्या सिखाया जाता है? मिथोलॉजी, उसके माइंड में फिक्स हो गया है, he is fixed with it and he is not able to accept it। ठीक है? और कैसे आपको फेथ, मेरे को एक डिवोटी ने बोला था कि प्रभु जी मैं बहुत साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, but I never got faith, I never got the full conviction because I thought it's anyway mythology, प्रभु जी, because I was taught like in school में मेरे को सिखाया गया था, but आपका सेमिनार जब मैंने सुना और मैंने आपका जो किताब जब पढ़ा, मेरा चैंटिंग का क्वालिटी इंप्रूव हो गया। ये जो नॉलेज है, इट्स नॉट ओनली फॉर लाइक हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ये आपके भक्ति से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप जो फॉलो कर रहे हैं उसका हिस्टोरिकल बेसिस है, आप जिस देश से बिलोंग करते हो कितना गौरवपूर्ण इतिहास है, कितना प्राउड इतिहास है। तो इसीलिए कभी भी जा रहे हैं, बस आपको तो सब डिफॉल्ट के बुक लेना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो फैमिली अफेक्टेड है एथिज्म से, सेक्युलरिज्म नाम का जो कीड़ा है उससे अफेक्टेड है, वोकनेस नाम का कीड़े से अफेक्टेड है, उनको एक किताब दीजिए, सच्चा इतिहास देखेंगे, फैक्ट्स समझेंगे। गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या यूजलेस चीजें हम देते हैं, शादी की गिफ्ट में क्या क्या यूजलेस चीजें देते हैं, ये किताब दीजिए। गीता ऑफ कोर्स आप देते होंगे, ये किताब भी दे सकते हैं, लोगों को देख सकते हो, जब पढ़ेगा उस घर के जो बच्चे पढ़ेंगे, यंगस्टर्स पढ़ेंगे, उनको रियलाइज होगा कि क्या गौरवपूर्ण इतिहास है, हम सच में हमारा इतिहास सच है, झूठा नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और हमारे कृष्णा एक्चुअल हिस्टोरिकल पर्सन है, झूठे नहीं है, सच्चे कृष्णा ने सच्चे भगवत गीता को बोला है। कैसा है ये आर्गुमेंट? तो इसीलिए एज डिवोटीज डेफिनेटली आप लीजिए, और मैं बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी लीजिए, क्योंकि वैसे भी लिमिटेड ही है, जितना ज्यादा कॉपी से लीजिए एंड गिव इट एज गिफ्ट इन फंक्शंस, या आप समझ रहे हैं कि आपके भाई ये वो रिलेटिव जो ये उसको भी चाहिए, उसको भी दीजिए, ठीक है। और मैं शायद यहाँ पे कब आऊंगा बताने, तो इससे गोल्डन आप सोचेंगे चलो प्रभु जी ऑनलाइन में ले लेते हैं, एक्स्ट्रा चाहिए तो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, सिग्नेचर फोटो जो भी चाहिए आपको तुरंत से हाथों हाथ मिल जाएगा, ठीक है। फोटो तो मेरा कोई वैलिड नहीं है, कम से कम सिग्नेचर थोड़ा दे दूंगा, शायद आपको कुछ खुशी हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं अभी कर सकते हैं, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। Amazon से भी कम रेट पे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, बिकॉज़ Amazon पे क्या है, Amazon वाला बहुत सारा कमीशन ले लेता है, तो वी हैव टू कीप हाई प्राइस देयर, बट यहाँ पे दैट लोएस्ट प्राइस में हम एक किताब दे रहे हैं, तो जो भी आपको चाहिए प्लीज आप आ जाना, और किताब यहाँ पे पीछे अवेलेबल है, दे देना। और विद दिस आई कंप्लीट टुडेस सेशन, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे हरे। So, Prabhuji Mataji, in fact, I was thinking while hearing the lecture, at the end I will come and tell this, and coincidentally Prabhu also told this, that after hearing this lecture, the impact should be our chanting should increase. Our chanting should become more, filled with faith, isn't it? Who is our father? Krishna. Who is our father? Krishna. Right? This should be like very clear in our heart, and I felt that. How many of you felt that? Right? See, I don't know. Hare Krishna, you all will get an opportunity to take the book, please. Prabhuji will sit here. You can take a book from there. There is a scanner code, Prabhuji keep there. It is 500 rupees, and you can add more as donation, because Prabhuji is traveling everywhere, and we want this book to go everywhere, right? So please, don't there is time, and you can bring the book here, take a signature, you can make a line. Right after I finish Darshing Aarti, you can start that. It hardly takes 10 minutes. Hare Krishna, Mataji, Hare Krishna. Yeah, very well. So,
Prabhuji. Just 1 minute, I'm just going to try to conclude and thank Prabhuji. So Hare Krishna. Yeah, Nana, you don't sit down. Yeah. So the book is there. We can definitely take this. See, one thing I want to tell is, have you heard of a dog's tail? Yes. कुत्ते का पूंछ टेढ़ा ही रहता है, right? I don't know how many atheists will be convinced with this. I don't know because वो कुत्ते का पूंछ है, कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं होता है. Even if you go and give the book, tell all the proofs, that fellow will continuously argue, saying, so पागल ही होता है ना, right? Unfortunately, we have been so programmed, we have been so much programmed. Nana, please sit down. Please. We have been so badly programmed that even if you give the proofs, I have my friend, I don't want to name him. I get trolled as soon as I put a message saying anything about Krishna. I get trolled, and you know, most of the people who they are, they from Tamilian Brahmins, Ayers, Tamilian people where the faith is the strongest, you know, in entire India, supposed to be. They are the people eating beef today. They are the people having all the bad habits, right? And they are the people trolling. And I'm going to buy this book and give to them. But I can tell you, kutte ka poonch. But I'm not saying that we're not going to try this. We'll try it. But most important thing this book should do is go to be devotees, that we don't leave our Sanatana Dharma. We don't leave our faith in Krishna. This session is to make us stronger. Is to make us stronger. And one more thing that we all can do, right? Krishna, please. One more thing that we all can do, and we all can do. We all work in big companies. The likes of Amazon, the likes of Microsoft, the likes of whatever company forces the growth. We should organize this session in our company. Think about it. How you're going to make it happen. Even if it's a small company, there are 200 people sitting, right? I was thinking while I was hearing this, I'm going to call Prabhuji to my company and try to get an appointment and try to have some 2 hour session. You know what? You never know how much people will be awakened. Because today if I say spiritual class, nobody will want to listen. But Mahabharat proves 10 triggers for people. And indirectly you are giving whom? Krishna. Actually, directly we are giving Krishna. I wish, and please pray with loud Haribol, that wish will come true, that this session will be given in every assembly of India. All these political leaders, whatever they are, whichever side, left, right, whichever side, they need to hear this, who their father is. And what our nation is, what are we fighting for? Right? Why do we wear a shikha? Why do we wear a shikha? Because we believe in Vedas. Right? So many things were told in such a short time by Prabhuji. And there are so many more things that are inside. If you are thinking now whether I should spend that 500, please leave India and go to British. There is no point. Right? Even now, if you are thinking whether it's worthy to buy this book and give it as a gift, we have still not understood what we are losing here. Right? Let's spread this knowledge. Because, see, we have Bhagavad Gita, we have Bhagavatam, we have such a nice set, we have everything. But there is a connection link also needed in terms of faith, where people need to get something like this and say, okay, now I can link. Krishna is my father. Krishna is my father. Aham bija pradapita. He's saying, I am your father. But I am not believing there is somebody called Krishna. Where is Krishna bija? Right? So let us take this opportunity. There are only limited stock there. Take it not only for yourself, even for somebody you love. But that person is not able to come towards Krishna consciousness. Buy it for that person. And go and give it. And this lecture recording is also there on YouTube. Right? And there are many such lectures Prabhuji has given. You can go and search with his name and with this material name and also the spiritual name. So let us thank once again this Chakrapani Prabhu with 3 loud and enthusiastic. I am very appreciative of small children, especially few of them here. The way they were answering, boy was not here. I'm amazed that
Actually, we are blessed with some children who are able to understand this and take this forward. At least our next generation is hope giving, looking at those children. And it's our responsibility to give this knowledge to our children also. I was literally pleading, all my young children here. Please come and sit, please come and sit, please come and sit. Because I don't know how else can I remove the monkey Darwin out of their heads. I don't know how else I can remove the stupid Big Bang out of their heads. I don't know how I can remove the Aryans out of their heads. Forget about their heads, my head. I don't know how I can remove it. Because we have been so badly programmed for what we have received so far. So let's pray to Lord Narasimha that He removes these obstacles between us and the faith. Like He removed the obstacles for Prahlad. Right? Let us intensely, actually this is Bhakti Vignanashika Rakshikadev, the one who saves our Bhakti. Right? So let us also pray that Prabhuji who came out of his ashram and he is going for the writing this and distributing this, risking life in today's real time, trust me, risking life. Somebody is convincing so nicely, he is a big threat to people with a big agenda. Let us pray for his good health. And let us pray for all the devotees who are doing these kind of activities. There are many more also. Right? Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste
भगवान की शिरोमणि प्रहलाद महाराज की श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की श्री ब्रह्म मत गौड़ी गुरु परंपरा संप्रदाय की टाइगर प्रेमानंद महाभारत इतिहास की हरि बोल। Yeah, Prashadam is on the terrace. Please everybody go to the terrace and there is Prashadam for everyone. Please go there and let us thank the Lalita group for making today's Prashadam with 3 Lord Hari Bol. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! And all the Mataji's and Prabhuji's who assisted. Hari Bol! Hari Bol! Hare Krishna, Prabhuji and Mataji's. Actually, just little 1 or 2 minutes, one to speak about Chakrapani Prabhu. Actually, I had known him for even before this book launched.